Hi, good evening, everyone. Today's symposium, which is going to come live from Udaipur, will be starting in a few minutes. अगले कुछ मिनट के अंदर में आज का जो symposium है, ये शुरू होने वाला है. We are just waiting for the live stream to connect right from Udaipur. तब तक आप सभी का स्वागत है. मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो भी लोग हमारे साथ में आज जुड़े हैं, एक फटाफट से अपने चैट बॉक्स के अंदर में अपना नाम टाइप कर दीजिए, आप कहाँ से आ रहे हैं एंड व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन. दिस इज मेडिकल वेल सेमिनार. तो आप में से जो जो डॉक्टर्स हैं, प्लीज टाइप जरूर कीजिएगा आपका नाम, आप कहाँ से आ रहे हैं. यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं डॉक्टर अलका गुप्ता. गुड इवनिंग डॉक्टर अलका. डॉक्टर अश्विनी फ्रॉम बेलगांव. डॉक्टर नीरज यादव आए हैं हमारे साथ में भोपाल से. गुड इवनिंग डॉक्टर नीरज. डॉक्टर गोंगले हमारे साथ में आए हैं. कहाँ से आए हैं वो नहीं दिख रहा है. डॉक्टर ललित हैज कम फ्रॉम इंदौर. वेलकम डॉक्टर ललित. डॉक्टर दीपा कुलकर्णी फ्रॉम बैंगलोर. वेलकम. And we have got Sadashiv Bhagwat. Okay, you're a patient. चलिए, welcome Sadashiv ji. Good to see you here. Chandra Prakash ji. Chandra Prakash ji, you are an Ayurvedic practitioner from Chandigarh. नमस्कार चंद्र जी, आपका स्वागत है. श्वेता वैद्य मैम है हमारे साथ में थाने से है. डॉक्टर रिमी is from Lucknow. Welcome everyone. We'll be just starting in next couple of minutes. तब तक के लिए थोड़ा सा म्यूजिक सुनिएगा. हम बस हाजिर होंगे अगले कुछ ही क्षणों के अंदर में.
इवनिंग एवरीवन वंस अगेन। अभी अभी लेटेस्ट अपडेट है कि उदयपुर में सेशन जल्दी ही शुरू होने वाला है। चलिए तब तक हम बात करते हैं कि आज के सेशन कार्डियोलॉजी सिंपोजियम के बारे में। तो ये कार्डियोलॉजी सिंपोजियम में आप क्यों आना चाहते हैं? आई कैन सी डॉक्टर संजय मीना हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सो आई वांटेड टू आस्क यू कि आज की इस कार्डियोलॉजी सिंपोजियम से आपकी क्या अपेक्षा है? व्हाट इज इट दैट यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सिंपोजियम? यहाँ पर उदयपुर में डॉक्टर्स गए हुए हैं, काफी तैयारी हुई है वहां पर, जोर शोर में, बहुत ही बढ़िया वातावरण है, लॉट ऑफ एंथुसियाज्म ओवर देयर। तो चल रहा है वहां पे। अभी अभी मैं स्टूडियो से बात कर रहा हूँ, देखा मैंने, अभी जस्ट बात की है तो पता चला कि इट इज रियली रियली अ फैंटास्टिक एनवायरनमेंट ओवर देयर। सो हमारे साथ में आप जो जुड़े हुए हैं, जस्ट मुझे एक चैट बॉक्स में टाइप करके बताइए कि आपकी क्या राय है, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम दिस सिंपोजियम। जब बात करते हैं कार्डियोलॉजी की एंड कार्डियोलॉजी के बारे में, तो जनरली पहला ख्याल हार्ट डिजीजेस के बारे में पहला ख्याल क्या आता है? एज अ डॉक्टर एंड एज अ पेशेंट बोथ, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड? टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर में, बताइए कि आपका सबसे फर्स्ट थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में क्या आता है व्हेन यू टॉक अबाउट कार्डियोलॉजी या कार्डियक के बारे में अगर बात करें, तो फर्स्ट थॉट दैट कम्स इनटू योर माइंड क्या है? और आज के जो सेशन है उसके अंदर में हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं तीन टॉप दिग्गज, जिसमें से है डॉक्टर रोहित सानी, फाउंडर ऑफ माधवबाग, फेलो इन प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, और बहुत ही बढ़िया उनका जो अमालगमेशन उन्होंने किया है बिटवीन मॉडर्न मेडिसिन एंड आयुर्वेदा। मॉडर्न मेडिसिन के कुछ बहुत अच्छे तत्वों को उठाया है, समझा है, उसे गहराई में परखा है, और उसके साथ ही साथ में उस मॉडर्न मेडिसिन के तथ्यों को मिलाया है बहुत ही गहरी और बहुत ही बड़ी डेप्थ वाली नॉलेज आयुर्वेद की। तो आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के कॉम्बिनेशन से माधवबाग की नींव रखी गई, और माधवबाग के अंदर में वर्क होता है एक प्रोटोकॉल बेस से। तो क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में हम बहुत ही जल्दी जानेंगे। रामदास तांडेल जी जुड़े हैं मुंबई से, वेलकम रामदास जी। विनय जी जुड़ी हुई हैं, रवि अंबेडकर जी, नमस्कार, आप लोगों का स्वागत है, वेलकम, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू दिस इवनिंग सेशन। आज का सेशन काफी बड़ा ही उत्साह से हम इंतजार कर रहे हैं, जयपुर की टीम का जुड़ने का। जैसे जुड़ते हैं तो वील हैव अ वंडरफुल टाइम। और आज हमारे साथ में और डॉक्टर रोहित साने सर के साथ में आ रहे हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। डॉक्टर संजीव शर्मा इज अ वाइस चांसलर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो है स्थित जयपुर में, और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के हेड कर रहे हैं डॉक्टर संजीव शर्मा। So Dr. Sanjeev Sharma is one of the second key panelist on it, and we have the third key panelist, not in the order, and not in the order of any priority, is Captain Dr. Amit Kumar Sharma. Captain Dr. Amit Kumar Sharma has been a captain in the Indian Territorial Army, associate professor, Department of Kaya Chikitsa in MFJ College of Ayurveda in Jaipur. तो जयपुर उदयपुर में, जयपुर से गए हैं उदयपुर की तरफ में। उदयपुर में आज का इस सेशन शुरू होने वाला है, बहुत बहुत उत्साह है, और माधवबाग के भी डॉक्टर्स बड़ी मात्रा में अपनी प्रेजेंटेशंस, केसेस, अपने स्टडीज को प्रेजेंट करने के लिए गए हैं यहाँ पे थर्ड कार्डियोलॉजी सिंपोजियम के अंदर में। वहां पे भी बढ़िया तैयारी चल रही है, पीपल आर रियली रियली क्वाइट एक्साइटेड। शीतल जी हमारे साथ में जुड़ी है सांगली से, नमस्कार शीतल जी, आपका भी स्वागत है। सो मेरा क्वेश्चन अगेन आप सबसे है कि जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीजेस की, तो एक चीज बहुत कॉमनली पता बताई जाती है हार्ट डिजीजेस के बारे में, दैट हार्ट डिजीज एक ऐसी बीमारी है जिसका नाम सुनते ही हमारे हार्ट की बीट या तो बहुत बढ़ जाती है या तो कम हो जाती है। सो एक
patient as a doctor, यहाँ पर हमारे साथ में डॉक्टर सुचिता जी जुड़ी हैं from Amravati. Welcome, Dr. Suchita. Good evening. So, as doctors, all of you who have joined over here, my question to you is: when you see a patient with heart disease, right? What is the first thought that comes into your mind as a doctor, and what is the first question that the patients ask you as a patient to you? टाइप कीजिए चैट बॉक्स के अंदर में, बहुत ही जल्दी हम लाइव जाने वाले हैं, सो प्लीज टाइप योर आंसर्स इन दी We are having answers coming in. We've already started having people who have started responding to the question. Suchita, Dr. Suchita का कहना है कि heart diseases are life-threatening. They're not curable, or whether they are curable or not is what the patients ask. You got Dr. Purnima Chavan from Indore, Madhya Pradesh. Ramba, good evening, Dr. Purnima. Welcome to this event. Good to see you here. Nice to see you in this live session. We are also waiting. We'll be very soon going live. We're waiting for the live feed to start from Jaipur. Udaipur, sorry, not Jaipur. Udaipur से हम live feed के शुरू होने की वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं. बस बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है वहां से live feed, and we will be starting the live session. We will be starting the symposium very soon. So मेरा question है, thank you Dr. Suchita for typing your answer. मैं यहाँ पर हमारे साथ में बाकी के डॉक्टर्स जो जुड़े हैं, मैं उनसे भी ये क्वेश्चन का आंसर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज टाइप कीजिए. डॉक्टर नीरज है, डॉक्टर अलका है, डॉक्टर अश्विनी. आई वुड रिक्वेस्ट यू टू टाइप कि पेशेंट्स आपके पास में जब हार्ट डिजीज लेके आते हैं, राइट, पेशेंट आपके पास में एक हार्ट डिजीज लेके आते हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या रहता है उनके दिमाग में कि ये हार्ट डिजीज को लेके उनके दिमाग में कुछ शंका है, कुछ डर. What is it that the patients who come to you with heart disease ask the question? So क्या क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में. लेट मी नो कि क्या आपका कहना, आपका क्या एक्सपीरियंस है. सो कार्डियोलॉजी और हैंडलिंग कार्डियक केसेस. ओके, अंशु जी have not understood the question. चलिए अंशु जी, मैं फिर से आपसे क्वेश्चन रिपीट करता हूँ. एज अ डॉक्टर, ये मेडिकल सिंपोजियम है, तो एज अ डॉक्टर जो आप जुड़े हैं, एक हार्ट पेशेंट जब एक डॉक्टर के पास में जाता है, तो सबसे पहला सवाल, अगर आपको पता चलता है या पेशेंट को पता चलता है या आप बताते हैं पेशेंट को कि आपको हार्ट डिजीज है, हार्ट की बीमारी है, हृदय रोग है, तो पहला ख्याल
क्या आता है दिमाग में और पहला सवाल क्या पूछा जाता है पेशेंट का डॉक्टर से हार्ट डिजीज के बारे में? तो ये क्वेश्चन है मेरा। अगर कैन आयुर्वेदा ट्रीट हार्ट डिजीज, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी वाइज, वेरी नाइस क्वेश्चन। कि आयुर्वेद डॉक्टर के पास में आने के बाद में हार्ट पेशेंट का एक ख्याल आता है कि क्या आयुर्वेद से हार्ट डिजीज ठीक किया जा सकता है या नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। विनय जी का क्वेश्चन है कि क्या हार्ट डिजीज रिवर्सिबल या क्यूरेबल है कि नहीं। ये भी क्वेश्चंस पेशेंट पूछते हैं। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, आई टोटली अग्री विद यू। और शीतल जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि पेशेंट्स पूछते हैं चेस्ट पेन के बारे में। शीतल मैम, आपसे मैं थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा, इसको थोड़ा एलैबोरेट करें कि पेशेंट चेस्ट पेन के बारे में क्या पूछते हैं। मतलब फर्स्ट क्वेश्चन, पहला सवाल जब हार्ट, आप बोलते हैं कि उनको हार्ट की प्रॉब्लम है एज ए डॉक्टर, तो पहला सवाल क्या पूछते हैं पेशेंट? यहाँ पर हमें क्वेश्चन आया कि क्या सर्जरी के बिना हार्ट डिजीज ठीक हो सकता है, ऐसा कहा गया है। सो प्लीज आपका नाम भी टाइप कीजिए, आप कौन से कहाँ से जुड़ रहे हैं, इट विल बी नाइस टू लेट अस नो। रवि जी का क्वेश्चन है, रवि जी कह रहे हैं कि चेस्ट पेन के बारे में पेशेंट सबसे पहले पूछते हैं। वेल सेड। हर इंसान को दर्द, पेन इज द फर्स्ट थिंग दैट मोटिवेट्स, फर्स्ट थिंग दैट is going to ask the people to come. Now, होता यह है कि जो पेशेंट आता है कई बार दर्द के डर की वजह से आता है। पेशेंट कम्स बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ द पेन, बट उससे भी ज्यादा फियर पेशेंट का क्या रहता है? आप में से अगर कोई पेशेंट्स हैं जो जुड़े हैं इस सेशन को देखने के लिए, तो एज अ पेशेंट भी आप टाइप कर सकते हैं कि हार्ट डिजीज के बारे में आपका डर सबसे ज्यादा क्या रहता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पेन, वी आर टॉकिंग अबाउट फियर, एंड we will be very soon talking about how this pain, how this fear, how this the dread, जो डर है एक हार्ट की बीमारी के आसपास में, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, कैसे उसे उसे बचाया जा सकता है अपने आप को, ये जानना है। तो कैसे होगा ये? तो ये हम जानेंगे अगले कुछ ही क्षणों के अंदर में। बात करेंगे, देखेंगे आज के इस वेबिनार को, सेमिनार को। और इस सेमिनार में हम देखेंगे कि क्या किया जाता है, क्या हो रहा है, कुछ डॉक्टर्स ने जो क्या किया है, व्हाट आर दे डूइंग। और जो हमारे पैनलिस्ट हैं आज के, वो पैनलिस्ट अपने लाइफ के, अपनी प्रैक्टिस के एक्सपीरियंस से बताएंगे कि उन्होंने क्या करना है। सो कीप टाइपिंग, कीप चैटिंग, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सुमेधा जी का कहना है कि वी आर नॉट गेटिंग स्लीप प्रॉपरली एंड वी आर आल्सो हैविंग कॉन्स्टिपेशन। ये पेशेंट, सुमेधा जी, आर यू आस्किंग एज अ पेशेंट और यू आर आस्किंग एज अ डॉक्टर? थैंक यू फॉर टाइपिंग। भागवत जी हमारे साथ में हैं, वो कह रहे हैं कि विद द हेल्प ऑफ माधवबाग हार्ट प्रॉब्लम्स आर श्योरली क्यूरेबल। सदाशिव भागवत जी, सदाशिव जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्फिडेंस। इट इज वेरी नाइस टू सी दैट कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम यू। बहुत अच्छा लगा आपसे। बात सिर्फ माधवबाग की नहीं है, बात आयुर्वेद की है, बात अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक साइंस की है। साइंस क्या कहता है, एक बीमारी को पैदा करने वाले रिस्क फैक्टर्स क्या है, इसकी जड़ क्या है, इसकी नींव क्या है, इसकी मूल प्रॉब्लम क्या है, मूल कारण क्या है, रूट कॉज क्या है। अंडरस्टैंडिंग द रूट कॉज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रूट कॉज। ऑफ कोर्स एज मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आप लोग जानते होंगे कि बीमारी का रूट कॉज क्या है, बट मैं आज, आप जब तक ये लाइव फीड शुरू होती है, अनफॉर्चुनेटली आज मेरा भी कैमरा शुरू नहीं हो पा रहा है, तो आपको मेरे स्क्रीन सेवर से ही काम चलाना पड़ेगा, बट आई होप आप मेरी आवाज आपको क्लियरली आ रही है। मैं यहाँ पर आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके पेशेंट्स, या आप अगर पेशेंट्स हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिजीज, वी आर टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ हार्ट डिजीज। एक हृदय रोग को की बीमारी को, हृदय रोग की बीमारी को ठीक करने की हम बात कर रहे हैं, और हार्ट के आसपास में, हार्ट डिजीज के आसपास में फैलते हुए इमोशंस की हम बात कर रहे हैं। सी, किसी भी बीमारी को, किसी भी
बीमारी को अगर ठीक करना है तो वी नीड टू गो डाउन टू द बॉटम ऑफ द डिजीज, वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस. बट इक्वली इंपॉर्टेंट इज द इमोशनल एस्पेक्ट, द साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इट. सो क्या चीजें हैं दैट रियली ब्रिंग कंसर्न? टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में. देखिए हम और आप वैसे भी जुड़े हुए हैं, वेट कर रहे हैं लाइव फीड उदयपुर से शुरू होने का. तो जब तक शुरू होता है थोड़ी बातचीत करते हैं. मे बी इस बातचीत से हमें कुछ नए तत्व मिलेंगे, इस बातचीत से हमें कुछ नए आइडियाज मिलेंगे. इस आइडियाज से क्या पता हम सब मिलके एक दूसरे से कुछ ना कुछ नया सीख पाएंगे. मे बी पेशेंट्स हो तो पेशेंट से हम सीख सकते हैं, डॉक्टर्स हैं जो अलग अलग फील्ड के, उनसे हम सीख सकते हैं. लेट्स स्टार्ट शेयरिंग आवर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग हार्ट डिजीजेस. सो नंदलाल जी हैं, उनका क्वेश्चन है कि हाउ टू रिवर्स फर्स्ट ग्रेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी विद आयुर्वेद. नंदलाल जी, ये तो बहुत ही स्पेसिफिक एंड बहुत ही इन डेप्थ आपने मेडिकल क्वेश्चन पूछ लिया, जिसके ऊपर में डिस्कशन एक अलग स्तर से होनी चाहिए. बट मेरा क्वेश्चन है पेशेंट पर्सपेक्टिव से, इमोशनल पर्सपेक्टिव से, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से. सुमेधा जी वेलकम मैम, गुड टू सी यू. यू आर एन आयुर्वेदिक थेरेपिस्ट. अच्छा लगा आपको यहाँ पे देख के, एंड गुड कि आप यहाँ पे जुड़े हैं और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. क्वेश्चंस पूछिए, बातचीत कीजिए, अपने एक्सपीरियंस शेयर कीजिए as a doctor, as an Ayurvedic practitioner, as a person who is also a patient. आप अगर पेशेंट भी हैं तो पेशेंट की तरह भी चैट कीजिए. बट लेट्स हैव अ डिस्कशन. जितनी हम बातचीत करेंगे उतना ही हम और पॉइंट्स को एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पाएंगे और एक दूसरे को समझ पाएंगे. तो आज के सिंपोजियम को शुरू होने में बस कुछ ही समय की देरी है. वी आर वेटिंग फॉर द लाइव फीड टू स्टार्ट फ्रॉम उदयपुर. तो उदयपुर में से लाइव फीड आना बस अभी शुरू होने वाला है, उसी की राह देख रहे हैं. एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टू स्टार्ट. तो चलिए तब तक बातचीत जारी रखते हैं, तब तक चैटिंग जारी रखते हैं. एंड लेट्स कीप अंडरस्टैंडिंग दीज पॉइंट्स. आपके पॉइंट्स प्लीज डालिएगा. आपके एज अ पेशेंट, एज अ डॉक्टर, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ थेरेपिस्ट, हर किसी के पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स गेट दीज पॉइंट्स ऑन टेबल. सो प्लीज टाइप कीजिए, मैं आपके कमेंट्स का वेट कर रहा हूं. एंड लेट्स लुक एट योर कमेंट्स. सो अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आया कि भाई आप कौन बोल रहे हैं. नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर अमन कपूर एंड माधवबाग की टीम की तरफ से आपका स्वागत कर रहा हूं आज के इस लाइव सेशन के लिए. मैं बैठा हूं स्टूडियो के अंदर में और वेट कर रहे हैं हम उदयपुर से आने वाले लाइव फीड के लिए. तो तब तक, जब तक लाइव फीड आता है तब तक आपको मेरी बड़बड़ से ही काम चलाना पड़ेगा. सो ग्रेट, I can see. Great, great, great. Good question. Anshu's Corner. आपका नाम भी बता सकते हैं क्या please? I think I missed your name. Can you please type your name? You've got a very good question. Nowadays, famous celebrities have having sudden death due to heart attack. It has created a fear in many people about lifestyle. Good point. It's a very good point. Looking at lifestyle. So here there are 2 points that we need to understand. We are talking about heart attack or cardiac arrest. There are 2 areas which we need to think about and we need to look at it. सुमेधा जी, उनका क्वेश्चन, उनका चैट आया है. उनका कहना है कि normally I would suggest to go with Ayurveda, but people are still not aware about Ayurveda's therapy for heart disease. I like that point. You've really written a very important point, सुमेधा जी. बहुत important point आपने कहा है. अब अगर आयुर्वेद की अवेयरनेस लोगों तक बढ़नी चाहिए, और ऐसा क्या किया जा सकता है आयुर्वेद में कि लोगों को ज्यादा समझे हार्ट डिजीज रिवर्सल के बारे में. तो टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में. थैंक यू सुमेधा जी, आई रियली अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप इंटरैक्ट कर रहे हैं और आपके बहुत ही अच्छे सुझाव, टॉपिक्स, चैट्स आ रहे हैं. आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर पुटिंग दोस थिंग्स. एंड डेफिनेटली आयुर्वेदा कैन क्योर हार्ट डिजीज, आपका कहना है. बिल्कुल, आई एग्री विद यू. डेफिनेटली वी अग्री ऑन दैट. बट मेरा पॉइंट क्या है डॉक्टर ललित सर, कि लोगों तक कैसे इस बात को समझाया जाए, या लोगों के दिमाग में क्वेश्चन, डाउट कहाँ पे आता है. अगर किसी को डाउट आता है तो डाउट कहाँ से आएगा और किस चीज को डाउट आएगा. मतलब एक हार्ट पेशेंट है, समझिए, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, मैं अगर एक हार्ट पेशेंट हूं और मैं आपके पास में आता हूं,
मेरे मन में कई शंकाएं रहेंगी, मेरे मन में कई डर रहेंगे। तो एज अ डॉक्टर आपको क्या लगता है, मेरे डर को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मेरे डर को एज अ पेशेंट, अगर मैं पेशेंट हूं और आप सब जो देख रहे हो, रादर सुन रहे हो मुझे, और मैं आपके पास में आता हूं कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम है और मैं बहुत घबराया हुआ हूं, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या लगता है मेरे लिए सही रहेगा? टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में। थैंक यू सो मच। ओके, गोइंग अहेड लुकिंग एट इट, सुमेधा जी का कहना है कि वी स्टार्टेड फ्रीलांस टू पीपल फॉर आयुर्वेद, नॉट बैड एन आइडिया, गुड आइडिया। आयुर्वेद ट्रीटमेंट फॉर एंजाइटी, exaggerated related heart anxiety and exaggerated related heart disease. ओके, स्ट्रेस, आई थिंक शायद आप स्ट्रेस क्या एंजाइटी की बात करने की कोशिश कर रहे हैं नंदलाल जी। गुड पॉइंट, थैंक यू फॉर शेयरिंग दोस पॉइंट्स। और हमारे साथ में और भी कमेंट्स आ रहे हैं। मेरा चैट बॉक्स थोड़ा, कमेंट बॉक्स थोड़ा हैंग हुआ है, जस्ट गिव मी 1 or 2 मिनट्स, मैं इस कमेंट बॉक्स के अंदर में फिर से हाजिर हो जाऊंगा। मेरा कमेंट बॉक्स क्यों हैंग हो गया? चलिए कोई बात नहीं, आई होप आपको मेरी आवाज आ रही है। सो इफ यू कैन हियर मी इट्स गुड, इफ यू कैन हियर मी जस्ट टाइप यस यू कैन हियर मी। वैसे मेरा कमेंट बॉक्स ही हैंग हुआ तो पता नहीं। ओके, सो चलिए, यस मेरे को कमेंट बॉक्स फिर से दिखने लग गया है। फंटास्टिक। सो यहाँ पर हमें दिख रहा है हेल्प 24 जो है उन्होंने लिखा है कि प्लीज शेयर डिटेल्स विद पेशेंट सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड वेल। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशेंट एजुकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। और अगर सिर्फ आयुर्वेद में नहीं, किसी भी डिजीज, किसी भी फील्ड, किसी भी ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर अगर हम लें, तो बीमारी से लड़ने का सबसे पहला कदम है सही ज्ञान, सही नॉलेज लेना। यहाँ पर देर इज नो वॉर, देर इज नो कॉम्पिटिशन बिटवीन डिफरेंट थॉट्स और स्कूल्स ऑफ थॉट प्रोसेस, बट हम हर किसी से लर्न करके, हम हर किसी से सीख के एक आगे इस नॉलेज को अमेलगमेट करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए, चैट बॉक्स में प्लीज चैटिंग जारी रखिए, तो आप, मुझे लगेगा कि भाई आप और हम साथ में हैं, एक ही जगह पे हैं, एंड इट फील्स नाइस टू कनेक्ट विद यू। सो दिस इज डॉक्टर अमन कपूर हियर, लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग योर चैट्स। मैं म्यूजिक को चालू कर रहा हूँ, मुझे जरा दीजिएगा 1 मिनट, तब तक मैं क्रॉस चेक करता हूँ कि क्या स्थिति है उदयपुर के अंदर में। ओके, स्टार्टिंग वहां से अभी अभी खबर मिली है कि
आई थिंक कुछ टेक्निकल कारण की वजह से डिले हुआ था स्टार्ट, और वो टेक्निकल कारण सॉर्ट आउट हो गया है. वी शुड बी लाइव वेरी सून. तब तक मैं मैसेजेस की तरफ में चलते हैं वापस से. थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड. और दिस इज डॉक्टर अमन कपूर हियर, वेलकमिंग यू बैक. यहाँ पे मैं देख रहा हूँ सदाशिव भागवत जी का मैसेज आया है. सदाशिव जी का कह रहा है कि एज अ पेशेंट फ्रॉम अंबरनाथ, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अपना खुद का एक्सपीरियंस दूसरों के साथ शेयर करने का, और उनको मदद मिली है, उनको फायदा हुआ है इस चीज का. सदाशिव जी, हैट्स ऑफ टू यू. नॉलेज जितनी हम स्प्रेड करेंगे और सही नॉलेज स्प्रेड करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आज ही जाइए गूगल में टाइप कीजिए और ढूंढिए, क्योंकि होता क्या है कि गूगल में आप टाइप करेंगे, चैट बॉक्स में आपको 50 चीजें दिखेंगी, और जनरली वो चीजें दिखेंगी जो आपको आपके किसी पर्पस की नहीं रहेगी. सो टॉक टू समवन हु कैन गाइड यू टू द राइट नॉलेज. ओके, गोइंग अहेड. यहाँ पर आई कैन सी डॉक्टर सुचिता. थैंक यू सो डॉक्टर सुचिता फॉर टेलिंग मी, कनेक्टिंग विद मी. एंड चलिए, यहाँ पर मुझे लगता है कि स्क्रीन पे, लेट्स लुक एट द स्क्रीन. आई थिंक आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि तैयारियां चालू हैं वहां पे. एंड लेट्स लुक एट द होल प्रोसेस गोइंग ऑन. क्या बात है, बहुत बढ़िया. तैयारियां उधर हो रही हैं. तभी तब तक, जब तक ये तैयारियां चलती रहती है, लेट मी गो अहेड एंड लुक एट द मैसेजेस दैट आर कमिंग इन, पॉपिंग इन. तो जस्ट एक क्षण दीजिएगा. मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे ओके, ऑल राइट. सो ये थर्ड कार्डियोलॉजी सिंपोजियम इज ऑलमोस्ट रेडी. कुछ माइनर टेक्निकल हिचेस थे, उनको सॉर्ट आउट किया जा रहा है. चलिए, तब तक हम चैट रीड करना शुरू करते हैं. लेट्स कीप टॉकिंग अबाउट दिस होल थिंग. हम चैटिंग जारी रखते हैं और बातचीत जारी रखते हैं. सुमेधा मैम, डॉक्टर सुमेधा जी हमारे साथ में हैं. उनका मैसेज ये है कि नाउ डेज आई हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ब्लॉग ऑन माय व्हाट्सएप स्टेटस to acknowledging the people. Wonderful, wonderful initiative, Sumedha ji. That's a wonderful initiative. Two things you can do is, blogs are very good medium of spreading the right knowledge. I totally agree with you. And also, when you acknowledge the right people, when you give the credit to the right people, it also helps in motivating the people for doing better. So यहाँ पर हमारे साथ में ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं कुछ माधवबाग के मेंबर्स भी दिखाई दे रहे हैं. सो इधर मिस्टर सुशांत कुलकर्णी है उधर ऑन स्क्रीन. और यहाँ पे देखिए, यू कैन सी द ट्रॉफीज फॉर रियली वेल परफॉर्मिंग डॉक्टर्स, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है पेशेंट इंप्रूवमेंट के लिए और पेशेंट की डिजीज रिवर्सल के लिए. उनके फेलिसिटेशन भी और उनके पेपर प्रेजेंटेशंस के अंदर भी होने वाला है. एंड वी हैव गॉट मिस्टर क्लिफर्ड कॉद्रोस. Clifford sir, thank you so much. Clifford sir is live right from Udaipur, who is helping us get all the live feed वहां से आपके लिए. So Clifford sir, बहुत ही बढ़िया, thank you so much. और पूरा जोश दिख रहा है यहाँ पर. आई कैन सी डॉक्टर्स आर गेयरिंग अप. पूरी आसपास में भीड़ इकट्ठी हुई है. बस एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट माइनर, थोड़ा सा जो टेक्निकल बचा हुआ है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए, सो दैट एवरीबडी कैन बी बैक इनसाइड द स्क्रीन. एवरीबडी कैन बी बैक एंड वी कैन रीस्टार्ट इट देयर. I think on screen we are looking at Dr. Rahul Mandole getting up. So yes, that's Dr. Rahul Mandole with us on the screen. I think I will request Mr. Clifford to please unmute the mic so that I can. Udaipur. We are honored to have the chief guest, Dr. Sanjeev Sharma and Dr. Amit Sharma. We are expecting our chief guest to hear in next 2 to 4 minutes. So I request all the delegates and my colleagues to be seated. And we are starting. We may start this conference within next 3 to 4 minutes. So I again request, it's my humble request to all my colleagues and the delegate to be seated. I can understand. So till that next 2 to 3 minutes, let's look at the chats further ahead. And I can see Amita Tripathi ji, unka message hai. Let me read through her message. She says that we can go through the underlying cause
whether it is mental, physical, social, and then we can educate the patient regarding the subsequent problems and suggest the right treatment from the right one. I love that message, Amitaji. This is really a fantastic message. Let me just translate it in Hindi for others also. पेशेंट के मानसिक, शारीरिक, सोशल, इमोशनल सारे कॉजेज को देख के एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी हिसाब से उनके बारे में पूरा समझने के बाद में हम पेशेंट को सही एजुकेशन और सही दिशा में लेके जा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन देने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डॉक्टर गौरव शेलके, वेलकम, गुड इवनिंग डॉक्टर गौरव शेलके, गुड टू सी यू हियर। मालवा के डॉक्टर गौरव शेलके हैं जो कोंडाली से जुड़े हुए हैं। एंड सुमेधा जी, moral of the story is we have to educate first from our family and then others. I kind of agree with you, Sumita ji. It's a partly agree with you. Yes, we have to educate ourselves. I mean, family को तो educate करना ही है, दुनिया को भी educate करना ही है। ये बात से मैं आपके काफी हद तक सहमत हूँ। बट दूसरी बात मेरी आपसे ये भी है कि सिर्फ फैमिली तक ही सीमित नहीं रहना, खुद की एजुकेशन करनी, खुद की नॉलेज बढ़ानी बहुत इंपॉर्टेंट है। वी नीड टू इंक्रीज आवर नॉलेज एज वेल एज कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। इंडिया में हम देखते हैं विश्व के सबसे ज्यादा हार्ट पेशेंट्स इंडिया में है। एवरी सेकंड हार्ट फेलियर पेशेंट इज एन इंडियन। सो दैट इज अ कंसर्न। We are sitting on a time bomb of heart disease. अगर 1990s के सर्वे को देखें of non-communicable diseases versus communicable diseases, the survey that was done of the number of deaths that are taking place in India in 1990, the survey revealed that the number of deaths that are taking place because of non-communicable diseases was around 32%. Okay, I think we are back on screen. I think it's time for me to keep quiet and go over there. I think we are still waiting for the connect. मेरे ख्याल से माइक वहां पर म्यूट हो गया है, so we'll just connect with them in a minute. Take the proceeding ahead. That Dr. Omkar coming on screen. Good evening. Good evening all, and welcome to Udaipur for the third Cardiology Symposium by Madhavbaug. Let's have a big clap for all of us. So in a moment's time, we'll be starting today's event. I hope all of you are very anxious to hear all the presenters, all the 5 presenters. We actually had 21 presentations at our end, and I have given them a name, 21 diamonds. We had 21 diamonds with us, and we have selected 5 Kohinoor diamonds out of these 21 diamonds. And all these 5 Kohinoor diamonds, the super presenters, will be presenting their case studies, their case topics in front of all of you. So just we will wait for some moment of time. Let our chief guest enter this hall, and then we are going to rock this third cardiology symposium. So we'll just wait for some few moments, and then we can start with today's event. I will request all the 21 presenters, the 21 doctors who had given their presentations to please seat in the first 3 rows. So we have already 5 presenters in the second row.
So I request all the 20 doctors, 21 doctors to please come ahead so that we can save time further in this event. चलिए जब तक सब लोग आते हैं, let's go back to chatting. Let's go back to chatting. शीतल जी का कहना है कि CPR training is also essential. शीतल जी, this is one thing that I agree with 1000%, not 100%, 1000%. Basic life support training is not just meant for doctors; it is also meant for every common man. एक हर एक आम आदमी, एक इंसान, एक कॉमन पर्सन, ले पर्सन को भी बेसिक्स ऑफ सीपीआर आना ही चाहिए. बेसिक्स ऑफ सीपीआर क्या कहते हैं ना, ये गोल्डन टाइम पीरियड है. ये गोल्डन टाइम पीरियड के अंदर में if we do not provide the right service, the right resuscitation, we will lose the person. So CPR, cardiopulmonary resuscitation, मेरी जबान लड़खड़ा रही है, उसके लिए sorry. So CPR is very essential, and it's important to know CPR. It's important to keep updated with CPR. So इससे मुझे question आता है कि all the doctors, those who are connected over here, do you have BLS certification? बहुत important है. हम सबको पता है BLS कैसे करना है, हम सबको पता है कि life saving के लिए क्या करना है. There is no doubt about it. But from time to time, by the rule of law, we need to keep ourselves certified for at least BLS. ACLS हुआ तो और भी बेहतर है, but at least we need to be trained on the BLS aspect of it. So Sheetal ma'am, I agree with you. CPR training is very, very essential. It's very essential. And a lot of lives have been saved since more and more people have started adopting to proper CPR methods and training. So that's a very critical thing. As now we are waiting for more people to come in on the screen, and I think the mic has got muted over there. Let's see. We'll again go unmute the mic. So let's talk about these topics more. डालते जाते हैं, डालते जाइए please. आपके सुझाव, आपके questions, points. We are here not only to look at the Cardiology Symposium, but we are also here to talk about how talking about cardiology practice and how we can help a patient who is having heart disease. एक हार्ट डिजीज के पेशेंट को हम कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. और इस बीमारियों का बर्डन कैसे कम कर सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. So I think Dr. Omkar Chaudhary, who's the head of training and development, is back on the stage. Dr. Omkar Chaudhary Madhavbaug के training and development head है, and he is now today the master of the ceremony, and he will be taking the symposium ahead. साथ में Dr. Bipin Gond है, who has just come. He is the zonal medical head of Madhavbaug. Requesting all to please be seated. Our chief guests have come here and they will be entering this hall in next 30 seconds. So please be seated and kindly keep your mobiles on silent mode.
इसलिए मैं मेरी बातचीत जारी रखता हूँ जब तक वहां पे बातचीत पूरी तरह से शुरू नहीं हो जाती। तो आप ओके, द चीफ Please गेस्ट आर देयर। welcome the chief guest, Dr. Sanjeev Sharma sir and Captain Dr. Amit Sharma sir. So good evening all. I am Dr. Omkar Chaudhary and I am the host of today's third Cardiology Symposium Udaipur by Madhavbaug. And it's my honor to be the host of this event and I'll be guiding you throughout this event. So first thing first, let us all stand. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा ग्रामीण उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नाम जननी तब शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 Bharat Mata ki jai. Thank you. It's my honor to introduce both our chief guests today for this third Cardiology Symposium Udaipur. Our first chief guest is Dr. Sanjeev Sharma sir, Vice Chancellor NII Jaipur. Sir, your huge contribution in the field of Ayurveda, academics and research has inspired thousands of Ayurveda practitioners in providing Ayurvedic treatments to their patients. Sir, your contribution to Ayurveda is also a great inspiration for Madhavbaug doctors. We seek your continuous support and cooperation in taking research in Ayurveda further so as to make it the first line treatment option for Ayurveda practitioners by uniting them. Thank you so much, sir, for being present in this third Cardiology Symposium. Our second chief guest is Captain Dr. Amit Kumar Sharma, sir, Captain Indian Territorial Army and Associate Professor Kai Chikitsa, MJF College of Ayurveda, Jaipur. Sir, your efforts to expertise in preventive cardiology and lifestyle disorders have not only been appreciated in India, but also internationally. You have excelled not only in Ayurveda, but also in serving our nation through Indian Army. It's a pleasure to have such an energetic personality like you for this third Cardiology Symposium. Now, may I request both our chief guests and Dr. Rohit Sane sir, Dr. Gurudatta Amin sir, and Shripad Upasni sir to come forward for Dhanvantari Stavan and Deep Prajwalan. Please.
नमामि धन्वासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुं भयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीना अमृताधिने वदैते देवे उदधिमन्थना यातुनीनो वरीयाला विश्वाचा स्वास्थ्यरक्षणा विष्णुचा अंश प्रत्यक्षा असा धन्वन्तरि प्रभु करो कल्याण विश्वासे सुधा कलशधारि विख्यातकीर्ति भगवन् स्वयमेव नामे धन्वन्तरि करितुरी विपदा जगाची संपादिला निज बळेची हवी विभाग आयुष्य वेद जनका अमुसे प्रणाम अमुसे प्रणाम अमुसे प्रणाम. So now, friends, let me give some crisp information about today's Cardiology Symposium. Initially, Dr. Gurudev. I think the camera mic has gone on mute. Can you please unmute it? The mic seems to have gone on mute. We'll just connect with the team in a second. There is a, I think by mistake, the mic seems to have gone on mute. We'll just connect back. माधवबाग के खोपोली अस्पताल. Okay. So the team in Udaipur, can you please check your mic connection? The mic seems to be off. We are not able to hear what you are saying. Can you please check your connection? Thank you very much. Let me try to get in touch with them over a phone call also. So let's see. Yes. और समान रूप से प्रभावी तरीकों के कार्यान्वयन में वे अग्रणी हैं. मरीजों और सहकारियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा होने के साथ डॉक्टर गुरुदत्त आमीन एक प्रतिभाशाली कवि, अद्भुत गायक और एक प्रभावशाली वक्ता भी है. मार्ग कठिन कंकरों से भरा है, मार्ग कठिन कंकरों से भरा है, मगर मधुमेह विजय का ध्येय सर पे लिया है कि आहार इच्छा से कम ही मिला हो. डाइट की फॉलो करा ना कि आहार इच्छा से कम ही मिला हो, सुबह उठ के चलना ये मन के विरुद्ध हो, पर व्याधि मुक्ति आसान नहीं है. यूं ही मिले उस विजय की क्या कीमत, जो कठिनाई से हो प्राप्त उसमें प्रभा है, जो कठिनाई से हो प्राप्त उसमें प्रभा. डॉक्टर गुरुदत्त आमीन ने माधवबाग के कई मूल्यवान शोधों में योगदान दिया है. विभिन्न टीवी और रेडियो कार्यक्रमों में उपस्थित होकर उन्होंने लाखों नागरिकों के बीच स्वस्थ जीवन के बारे में जागरूकता बढ़ाई है. हमेशा जीवन शैली से संबंधित बीमारियों से राहत दिलाने के लिए काम करना और हजारों रोगियों का इलाज कर उन्हें प्रोत्साहन देना, यही है एक प्रतिभाशाली व्यक्ति डॉक्टर गुरुदत्त आमीन. Before I hand over the stage to Gurudatta Amin sir, I would like to welcome both our chief guests with a bouquet.
I will ask Dr. Rohit Sane sir to please. Let me introduce Dr. Gurudatta Amin sir to you. Dr. Gurudatta Amin sir is BMS, MD Samhita, PGDEMS, Six Sigma Black Belt, joined Madhavbaug in 2007 and has mentored more than 1,500 doctors of Madhavbaug till now and has expertise in practice of preventive cardiology. Without speaking much, I hand over the mic to Gurudatta Amin sir. So please come on stage. Namaskar and welcome to all of you, all the guests, warm welcome. So आज का जो सेशन अभी मुझे बताया गया है वो है माधवबाग के अभी तक के सारे माइलस्टोन्स आप तक पहुंचाना। यहाँ तक हम आए हैं ये भी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन, isn't it? आफ्टर कोविड सबसे बढ़िया मेरे लिए एक प्राउड का फीलिंग होता है कि माधवबाग के सारे सेंटर्स ड्यूरिंग कोविड फुल फ्लेज चालू थे। तो इसके लिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। बहुत सारे आयुर्वेदिक फिजिशियंस या फिर आयुर्वेदिक पंचकर्म सेंटर्स में करीबन एक साल का समय लिया था रिजॉइन करने के, बट हमारे सारे सेंटर्स पेशेंट को सर्व कर रहे थे। यही शायद हमारा सबसे बड़ा माइलस्टोन है, यही बताता है कि हम कितने जुड़े हुए हैं हमारे ओवरऑल विजन के साथ। तो चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, ये प्रेजेंटेशन शुरू करें। क्लिप सर, आर यू रेडी? फाइन। सबसे पहले मैंने ये कुछ इमेजेस डाली। ये इमेजेस है खोपोली के हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के दरमियान की। आप देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ रेप्टाइल्स और स्नेक हुआ करते थे। मुंबई से बहुत दूर जगह पे ये एक हॉस्पिटल खड़ा करना, ये अपने आप में एक, मैं कहूंगा, पागलपन था। क्योंकि इतना दूर हार्ट का पेशेंट क्यों आए? एक्चुअली हार्ट का पेशेंट जनरली ढूंढेगा कि मैं किसी हॉस्पिटल के नजदीक ही रहूं। इतने दूर जाके खोपोली से यानी मुंबई से करीबन 60 किलोमीटर दूर जाकर एक हॉस्पिटल शुरू करना, ये अपने आप में एक जुनून था जो रोहित सर के सर पर सवार था। और वहीं पे उन्होंने एक विजन देखा था कि यस, हम हार्ट डिसीज को, ब्लड प्रेशर को, डायबिटीज को आयुर्वेदिक तरीके से कंप्लीट रिवर्स कर सकते। हम सबको ये मालूम है कि ऑलरेडी माधव साने सर ये काम कर ही रहे थे उनकी क्लिनिक में, लेकिन माधव साने की सर की ही ये सोच थी कि सिर्फ मेडिसिन नहीं, मेडिसिन के साथ साथ हमें पेशेंट के जिंदगी में भी बदलाव लाने। और यही सोच रखते हुए आज माधवबाग बढ़ चुका है करीबन 240 क्लिनिक्स, 2 हॉस्पिटल्स, 350 से ज्यादा आयुर्वेदिक फिजिशियंस हमारे साथ है और 5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स हमने आज तक ट्रीट किए हैं। अगर मैं और हमारा सक्सेस कहूं तो 3 लाख पेशेंट्स पर ईयर हमारे पास ओपीडी में आते हैं। करीबन 30,000 स्ट्रेस टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट एक ऐसी चीज जो करने के लिए हमारे हर एक डॉक्टर ज्वाइन होने के बाद डरता था। Am I right or wrong? स्ट्रेस टेस्ट करवाना इज समथिंग ग्रेट। स्ट्रेस टेस्ट क्यों करवाना मुश्किल था? क्योंकि स्ट्रेस टेस्ट के लिए सबसे पहले ईसीजी मालूम होना चाहिए। दैट टू ईसीजी, कौन सा ईसीजी? व्हेन द पेशेंट इज रनिंग ऑन द बेड, when the heart rate is going up, when the blood pressure is going up, when myocardial oxygen demand is going up, at that time the ECG changes जो आएंगे उन्हें आइडेंटिफाई करना और फिर पेशेंट के स्ट्रेसेस कंडक्ट करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टारगेट या एक ध्येय होता है। और वो हमने अचीव किया। करीबन 30,000 स्ट्रेसेस हम पर ईयर करते हैं। 1 लाख ECG करते हैं तो बहुत आसान या सिंपल बात हुई, बट 30,000 स्ट्रेसेस इज समथिंग व्हिच इज रियली ग्रेट, व्हिच डिफाइंस दैट हमारे डॉक्टरों का हार्ट एक लायन का हार्ट है। क्योंकि किसी पेशेंट को स्ट्रेस लेवल इंड्यूस करना ये अपने आप बहुत बड़ी चैलेंज होता है और वो हम सब करते हैं पेशेंट का फिटनेस असेस करने के लिए। तो यहां तक हम आए, यहां तक आने की जो जर्नी थी, उस जर्नी में हमने एक कोर फिलॉसफी को फॉलो किया था। ये मैंने एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस आर रिवर्सिबल इफ सिंसियर एंड टारगेटेड एफर्ट्स आर डिप्लॉयड इन मॉडिफाइंग हैबिट्स ऑफ द पेशेंट्स। आई होप ऑल ऑफ अस आर एग्री विथ मी कि माधवबाग क्या है? माधवबाग डाइट किट है, माधवबाग हर्बल मेडिसिन है, माधवबाग पंचकर्म है? नो, वी आर नॉट मेडिसिन restricted to medicine or diet kit or the panchakarma therapy. We are the organization which is interested to transform the patient's life.
उसके जीवन के सारे हैबिट्स को बदलना, ये हमारा ध्येय होता है और उसके लिए वॉट एवर इट टेक्स ये प्रिंसिपल हम फॉलो करते हैं। तो उसी के तहत इसमें से दो इंपॉर्टेंट वर्ड यहाँ पे, सिंसियर एंड टारगेटेड एफर्ट्स, जो हम अप्लाई करते, डिप्लॉय करते हैं, और उसकी वजह से आज तक हमने डिसीज रिवर्सल में इतनी बड़ी हिस्ट्री क्रिएट की है। लेट मी स्टार्ट विद हमारे पंचसूत्र। आयुर्वेद में जो शमन शोधन चिकित्सा कही गई, शमन चिकित्सा के अलग अलग प्रकार कहे गए, दीपन, पाचन, क्षुद्रुट निग्रह, आतप सेवन, मारुत सेवन, व्यायाम। इन चिकित्सा सूत्रों का पूर्ण तरीके से इस्तेमाल मुझे लगता है सिर्फ माधवबाग में। जॉइंट पेन का पेशेंट हो तो उसे हम चैलेंज लेके कहते हैं कि सिर्फ एक्सरसाइज से तेरा जॉइंट पेन हम ठीक करेंगे। हम डायबिटिक के पेशेंट को कह सकते हैं कि सिर्फ डाइट किट के माध्यम से हम तुम्हारा डायबिटीज कंप्लीट रिवर्स कर सकते हैं। हम ब्लॉकेजेस के पेशेंट को कह सकते हैं कि यस, सिर्फ डाइट किट के माध्यम से हम आपके ब्लॉकेजेस कंप्लीट रिवर्स कर सकते हैं। और इसके साथ साथ सारे आयुर्वेदिक प्रिंसिपल, फिर वो मनोचिकित्सा के हो, मनसो ज्ञान विज्ञान धीधृति समाधि भी, तो इसमें मनसो ज्ञान विज्ञान अर्थात डिसीज एजुकेशन, पेशेंट को खुद के लाइफ के प्रति जागरूक करना, ये भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। उसके लिए हमारी सारी सिस्टम कटिबद्ध है। तो ये कुल मिला के 5 सूत्र है, जिन सूत्रों का हम फॉलोअप करते हैं। आयुर्वेद में ये भी लिखा गया है, एकम शास्त्र मदीयम। हम सब जानते हैं कि ग्रंथकारों ने ये लिख के दिया है कि उस समय में, जिस समय में आप जी रहे हो, उस समय में जो कुछ शास्त्र उपस्थित है, अस्तित्व में है, उन सारे सिद्धांतों का, शास्त्रों का अध्ययन करना आवश्यक है। और उसी के तहत मॉडर्न डायग्नोस्टिक, डायबिटीज का मैनेजमेंट चल रहा है तो हम वहां पे सीजीएमएस का इस्तेमाल करेंगे, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का इस्तेमाल करेंगे, एचबीएवंसी का इस्तेमाल करेंगे, सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करेंगे, सीरम इंसुलिन देखेंगे, एचओएमआईआर देखेंगे, सारी एलोपैथिक इन्वेस्टिगेशंस करेंगे, पेशेंट की डिसीज स्टेटस को आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन वी विल ट्रीट दैट पेशेंट विद सिंपल आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स ऑफ शमन चिकित्सा, और उसी से हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। हमारे मेडिसिन भी है, बट अगेन आई एम putting a light on the same point that Madhavbaug is not about the medicine, Madhavbaug is not about exercise, not about the diet kit, not about the monitoring, but it is changing the habits of your patients. उसे अपने हेल्थ के प्रति सचेत करना, जागरूक करना, यही हमारा ध्येय है। क्या क्या अचीवमेंट किए हमने डायबिटीज में? सबसे पहले जब हमने HbA1c को प्रमोट किया था, हमने पेशेंट को अवेयर करना चालू किया, मासेस को अवेयर किया, एजुकेट किया, उनको असेस किया, और HbA1c असेसमेंट से हमने 2011-12 में से बहुत एग्रेसिवली काम करना चालू कर दिया। HbA1c पर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट माधवबाग के ट्रीटमेंट के बाद होते हुए दिखाई दी। उसी के संदर्भ में रिसर्च पेपर्स हमने पब्लिश करवाए। लेकिन बाद में जब हमने देखा कि यही सिद्धांत, when we kept on hitting on the same nail, what we have observed that not only control on HbA1c, but we can stop all allopathic medicines. All doctors, let me ask you one thing. माधवबाग में ज्वाइन करने से पहले गोलियां बंद करना, इसके बारे में कॉन्फिडेंट थे? But after joining Madhavbaug, this team, these doctors are so much so confident that 12-12, 15-15 एलोपैथी के मेडिसिन ये डॉक्टर स्ट्रक्चर्ड वे से, साइंटिफिक वे से धीमे धीमे पूरे पेशेंट के बंद कर देते हैं, with keeping all vital parameters under good control. So this is what our achievement, and then we have realized that after stopping all allopathic medicines also, we can achieve a next step of disease reversal, that is a glucose tolerance test. We can give 75 grams of sugar to the patient who is said to be a diabetic, and then we can test his blood sugar after 1 hour and 2 hours. और वहां पे हमने देखा कि complete disease reversal भी possible है, GTT negative भी possible है। अभी परसों जो वर्ल्ड डायबिटिक डे था सर, वहां पे हमने, ये सारे डॉक्टरों ने बहुत बड़ा एक जल्लोष किया था। करीबन 2500 पेशेंट्स को इन्होंने फेलिसिटेट किया, क्योंकि ये पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उन्होंने ये सारे हमारे सजेशंस को अपने जीवन में इस्तेमाल किया है और उसके बाद उनका डिसीज रिवर्स हुआ है। सो अभी वर्ल्ड डायबिटीज डे में वी हैव फेलिसिटेटेड मोर देन 2400 पेशेंट्स। आई थिंक यू डिजर्व क्लैप्स गॉड, आवश्यक है आपको सैल्यूट किया, हकदार हो। देन क्वेश्चन केम इन फ्रंट ऑफ अस। डॉक्टर राहुल जब गए थे चिल्लाराम इंस्टीट्यूट में तो उन्होंने कहा था कि डाइट से तो कोई भी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है, व्हाट्स न्यू इन इट? बट देन वी kept on thinking on what exactly we are doing. Then we realized that we are not just giving the patient temporary results. After 1 year of disease reversal also, near about 90% patients are in a euglycemic zone. That means एक बार डायबिटीज आपका रिवर्स हुआ तो करीबन 1 साल बाद भी 90% पेशेंट्स के चांसेस है कि वो यूग्लाइसेमिया यानी नॉर्मल शुगर लेवल्स में रहेंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, और इसी को हमने जापी यानी हम सबको मालूम है जापी का फुल फॉर्म
एक ऐसा जर्नल जिसमें जिसमें कोई रिसर्च जब आ जाता है तो बाद में वो टेक्स्ट बुक में भी आ जाता है। ऑल ऑफ अस आर अवेयर। तो ये रिसर्च पेपर में भी जा चुका है, अब आगे चल के ये टेक्स्ट बुक में आने वाला है कि यस, माधवबाग has successfully reversed the diabetes and they have kept their patients in euglycemic zone after 1 year of disease reversal also. तो ये अचीवमेंट हमने किया है, and thanks to Rahul sir and team for such a great achievement. Moving ahead, blood pressure एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक के लिए। अगर हम ब्लड प्रेशर के प्रिंसिपल्स को देखें तो एलोपैथी में ब्लड प्रेशर के प्रिंसिपल्स में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उसके अगेंस्ट जस्ट सेटल डाउन द सिंपैथेटिक सिस्टम और इनहिबिट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है। बट एट माधवबाग वी बिलीव that this is not only the problem with the sympathetic overactivation, but it is a problem with the structural vascular changes, which is nothing but the hardening of your arteries and the collection of the stromous material inside the vessels of your vessels or the walls of your vessels. तो इसे रिवर्स करना है तो क्या करना है? डेफिनेटली इसे अगर रिवर्स करना है तो यही प्रिंसिपल सारे इस्तेमाल करने होंगे। जस्ट सिंपल डायलेटर won't work over there because that administration of a just simple dilator would be a temporary solution. If you need a complete reversal of disease, then you need to reverse this pathophysiology of structural vascular changes. And based on that, आगे हम बढ़ते गए तो हम we realize कि it's not the 1 point का BP which is important, which has a great prediction value of mortality and overall survival. We realize that the ambulatory blood pressure monitoring is essential over there, and then we have conducted so many ambulatory blood pressure assessments. I can say proudly that recently our doctors, our clinicians have received the referral from the allopathic doctors to conduct ABPM. I hope many of you must have experienced it. This is something which is a great achievement for all of us. And what we have observed over there, the blood pressure falls from 147 to 137, 89 to 83. This is very significant because this is not the blood pressure reading inside the doctor's office. These are the readings on ambulatory blood pressure monitoring machine systems. So these values has a great importance. Day BP, night BP fall. Apart from that, or moving ahead, the nocturnal dip. All of us are aware that nocturnal dipping, whether the BP falls during night significantly or not, that defines the autonomic imbalance. And autonomic imbalance is associated with the sudden cardiac death. And over there, Madhavbaug therapy has proven that the therapy can improve the nocturnal deepening significantly. Before treatment, the BP fall was 1.9%. Later on, after treatment, it was 6.2%. This indicates that the autonomic nervous system, all of us are aware right now, the society or the medical fraternity is talking more about the heart rate variability. Heart rate variability is nothing but the imbalance between the sympathetic and the parasympathetic nervous system. And if that gets corrected, then things can be improved very well. Then comes a blockage reversal with the help of reverse diet and the monitoring. Let me tell you what has happened over there. Before of that, let me show you something that we have tested, few herbs to check their vasculoprotective role, and we have found that the Garcinia indica plays a very significant role in animal trial, that it can prevent the atherosclerosis, and that is very well proven, and hence we are using this medicine, our products very well. Moving ahead, with the help of reverse diet kit blockage management program, we have a data of 162 patients, which says that the blockages can be reversed by near about 29% in hardly 2 to 3 months. This was an eye-opener because the person who was doing a CT angiography, that person itself was not able to believe in this fact that yes, blockages can be reversed. When Dr. Rahul used to visit that radiologist, he was not agree in initial days to sign on that report, which was stating that the blockages has gone down. So this was the, I will say, an eye-opener, a paradigm shift, which says that the blockages can be reversed within just 2 to 3 months. And that's a great success for all of us. So these are the values. We can see that everything is improving, and this has a very great significant value. P value is very significant. Moving ahead, ischemia reduction. Since start of Madhavbaug, we believe that it's not the blockages which is ischemic heart disease. The blockages is a CAD, coronary artery disease. Someone might be having a 30% atherosclerosis,
He need not to be a patient of ischemic heart disease. Many of the cases when the patient is having a 70 or 80% blockages, there is also no need that the patient would be a patient of ischemic heart disease. Hence, we have decided to analyze or assess the patient of ischemic heart disease on MPI, myocardial perfusion imaging. And over there, we started treating them with IRP treatments. And what we have observed, that the ischemia burden can be reduced by 30% within just 3 months, as compared to the PTCA, which reduces the ischemia burden by 47% in 12 months. The Madhavbaug is achieving this target within 3 months, 30%. This paper was published in European Society Cardiology. So all of us are aware that these are the researches what we have published till today. And then comes the last disease category, that is a heart failure. This is a heart failure because this is a condition where patient actually feels or patient experiences a compromised quality of life, where the patient is not able to walk, not able to climb the staircases, or not able to live his life peacefully or happily or comfortably. Over there, Madhavbaug has done significant job. A first research paper published in the Lancet, which says that a Sampurna Hriday Shuddhikaran can improve a status of a heart failure. Then a research came up that the ejection fraction also can be improved. Over here, we can see that the ejection fraction has gone up from 39 to 45%. Then we plan for RCT, because all of us are aware what is the research methodology, and research methodology gives importance to randomized controlled trial. And over there, we got the significant success. The improvement in trial arm was very much significant. And the last, what I can say, evidence that this trial was successful. The evidence is this, that the cardiologist who was a principal investigator for this trial has decided to start a panchakarma therapy for his own patients. So this is something great, which is a milestone, and this paper was published in Indian Heart Journal. I can say these are the overall outputs. The survival rate, 3-year survival rate of Madhavbaug therapy. You can see over here, a Madhavbaug panchakarma therapy has a great survival rate near about 85% compared to PTCS, UABG, heart transplant, and beta blockers administration. So this is what the overall output of our therapies. Now let me tell you, ये सब करने के लिए हमें एक्चुअली मदद कौन करता है? हमें मदद करते हैं ये सारी चीजें, मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स. आपने देखा कि सारे रिसर्चेस जो कुछ हमने पब्लिश किया आज तक, वहां पे हमने सारे मॉडर्न डायग्नोस्टिक का इस्तेमाल किया, जो कुछ हमारे रोहित सर की विजन है, टारगेटेड बेटरमेंट यानी जो कुछ आप कर रहे हो वो कहां तक लेके जाने वाले हो उसके बारे में अक्सर वो बातें करते रहते हैं. सो मॉडर्न डायग्नोस्टिक, वी हैव इनकॉर्पोरेटेड ऑल मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स फॉर हार्ट डिसीज, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर. देन केम अ पेशेंट एजुकेशन. हम सब जानते हैं कि पेशेंट एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. वी स्टार्टेड विद द हृदय सेतु, वी स्टार्टेड विद द हार्दिक प्रोग्राम्स टू एजुकेट द पेशेंट फॉर इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसीज रिवर्सल. देन केम अ मॉनिटरिंग सिस्टम. मॉनिटरिंग सिस्टम का मतलब क्या है? अगर हम देखें माधवबाग के पास आने वाले पेशेंट्स, उनका पहले माधवबाग से पहले क्या मॉनिटरिंग होता था? हार्डली विद इन 3 months वो एक बार डॉक्टर से मिलते थे. बट व्हेन दे स्टार्टेड ट्रीटमेंट विद द माधवबाग, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टेलीकॉलर्स, हमारे कंप्लायंस एग्जीक्यूटिव्स, हमारे डायटिशियंस उनके पीछे ऐसे लग जाते हैं. यस और नो? कुछ पेशेंट थोड़े गुस्सा भी हो जाते हैं, राइट? उसके बावजूद हमारी टीम डेडिकेटेड है, डिटरमाइंड है कि यस, कुछ भी करके 90 दिनों में इस पेशेंट को रिवर्स करना है. और वहीं पे ये मॉनिटरिंग सिस्टम काम में आती है. इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंट पार्टिसिपेशन, पेशेंट को पार्टिसिपेट करवाना, उसे मोटिवेटेड रखना, उसे चैलेंज देना, ये हमारा टारगेट होता है, ताकि पेशेंट खुद इस डिसीज रिवर्सल जर्नी का ओनर बने, वो ड्राइवर सीट पे बैठे. और इसके लिए हमारी सारी सिस्टम्स एक्टिवेटेड रहती है. मोटिवेशन एंड फन, essential part of disease reversal. डिसीज रिवर्सल की जर्नी अगर बोर हो तो वहां पे मजा नहीं आएगा. इसलिए मोटिवेशन एंड फन, बहुत सारे सेशंस हमारे डॉक्टर्स लेते रहते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज करते रहते हैं, और उसी के माध्यम से पेशेंट की लाइफ में हैप्पीनेस ऐड होता है. So it is always important to keep your patient happy at the end of the day. Improved patient is very important for us, but improved and happy patient is really what we should aspire, और वहीं तक हमें पहुंचना है. Every patient who is improved should be happy with us. आगे चलते हुए मेडिकल ऑडिट्स एक बहुत टॉर्चर बात. यस और नो? इट माइट बी मंडे मॉनिटरिंग हो, रिव्यू हो, तो हमारे डॉक्टर्स बेचारे अपने पास एनरोल हुए हर एक पेशेंट के इंप्रूवमेंट के लिए जिम्मेदार है. सो द हायरार्की, अवर क्लिनिक हेड्स हो या फिर जोनल मेडिकल हेड्स हो,
I think Mike shuts it. Mute पे चला गया है. You'll have to just check with the team. Just give me a second. Probably could be a fraud. हमारे PC, they are our internal customers, and we invest on them, invest on their happiness, so that they can give a to the society. Continuous education. Continuous education is essential or not? अभी जब कोर टीम के लोग मिलते हैं तो छोटे बच्चों को इन सब लोगों ने क्या बताया? छोटे बच्चे जो आए उनको क्या बताया? They have said कि ये कौन है? ये हमारे टीचर है. आपके जैसे टीचर होते हैं वैसे हमारे भी टीचर है. This is what a great achievement. And the finally failure mode analysis based product development. जो कुछ नया प्रोडक्ट डेवलप होते रहता है उसके लिए फेलियर मोड एनालिसिस के प्रिंसिपल्स हम फॉलो करते हैं ताकि हम बेहतर प्रोडक्ट आप तक लेके आए. एंड द लास्ट पॉइंट इज डिजिटलाइजेशन. आई रिक्वेस्ट ओवर हियर कि जो हमारे गेस्ट है प्लीज आप आइएगा क्योंकि हम एक अलग एक्टिविटी यहाँ पे रन करने वाले हैं. दिस इज अ पावर मैप. व्हाट डू यू मीन बाय पावर मैप? हमारी जो CMS है या फिर MIB पल्स ऐप है, ये पल्स ऐप और MIB हमारी सिस्टम, ये सारी चीजें एक साथ हमारे डॉक्टरों को मदद करती रहती है उनके घर में बैठे हुए पेशेंट्स को मॉनिटर करने. डॉक्टर सुहास विल गिव देम दैट डेमोन्स्ट्रेशन. बट मैं चाहूंगा कि सर आपके हाथों से ये पढ़न लॉन्चिंग हो जाए. सो हाउ वी विल मैनेज? You can give that mouse, sir. Sir, so today it's a big day for us because ये सारा जो research चल रहा है, ये सारे जो parameters आ रहे हैं, all these medical parameters go into a system called CMS where our doctors are doing their case papers in the clinic, and all our patients wherever they are, they be offline, online, or they be at their home, they use our MIB Pulse app through which they enter their vitals, their daily status, their allopathic medicines. So all this information is reaching the doctors and doctors are supporting them 24/7 for their queries through chats. So all this is a ecosystem that we are trying to build and bring all these parameters together so that it can be put through one engine so that that intelligence can be built to guide future generations and current day-to-day practice. So that is what is Power Map. So that's just start of the race today. We are just hitting the bullet, and that live demonstration I am taking a courageous step by doing the live demonstration today. But the launching is at your hands today. So the full form is Power Medical Analysis Panel. So panel. So it's health analysis at one click for each and every doctor. So by just pressing this button, we could just do the launching. So please go back to the slide. Just play the video. This was just the reveal of the logo. We will do a live demonstration. Thank you, sir. So please, can you go back to the browser, please? Yeah. So this is the power map, and this is the engine which is built on the parameters put in by the doctors. So what we'll do today, we'll ask the doctors their patients' phone numbers so that we can put in the phone number and check where the patients are reaching these parameters so that we can see live what is happening. So I'll request doctors. So anyone from you, you all can just tell me the phone number of your patients and we could see the live data of the patients. So any one of you? Yes, Dr. Vijay. Please, can you please key in the phone number? 7
7248 98 5648. Okay. All right. So Cliff, can you refresh these buttons? So now here we can see this is the patient, and he is into treatment for diabetes DM2 HTN, meaning the treatment for diabetes and hypertension and obesity. So we can see the BMI of the patient has reduced from 33.26 to 28.76. It's almost a weight loss of more than 10 kgs that we can see here. Now, these are the parameters that are coming from the MIB Pulse app that the patient is using at home. So these are the steps that the exercise the patients are doing at. So on daily basis, whatever steps the patient is capturing are being captured here. So we can see into the numbers that, so about 9,000 average steps this patient is taking. So what Gurudat sir was trying to explain, that the use of exercise extensively, what the patients are doing, can be mapped and seen here. Okay, so sleep. So Trayopstamba. So Nidra, we are capturing here quite well. So we are monitoring how the patient is sleeping on day-to-day basis, so that also helps us in analyzing the patient's health. So now we've put in some ideas behind, and to start with, we have put in weight loss as a parameter because the patients are on diet kits. So we can see here, as per his 2 diet kits, his weight has reduced more than 8 kgs. So he's on a 100% track of reverse. So this is how we are just mapping the journey. Now let us go deep dive into the medical parameters. So this is how his waist size has come down. His blood glucose levels are being monitored. Heart rate is there. Blood pressure is there, which is always between 130 and 670. Blood oxygen, and this is the fasting and postprandial sugar, which are now pretty much within below 130. So go down a bit, sir. So to go a bit more into this, so we could just click on the vital and see all the numbers there on the last tab vitals. Yeah. So all the vitals put on daily basis are analyzed within even in relation to each other, like blood pressure in relation to the heart rate, glucose in relation to the weight loss that is happening. So in this way, all are comparatively analyzed, and whatever the data is keyed into the case paper can be seen in one shot. So Praveen sir, case paper please. Okay, so these are the case paper data. Go that side. Yeah, go that side. So in this way, these daily parameters, whatever are being entered, will be captured on daily basis. So these are the vitals that are being captured. Thank you so much, Suhas sir. So this was one patient. We could go on and see other patients. This is just the starting point. We are bringing in more scores to analyze in this. We are trying to bring in indexes like Rothman index and further intelligence, so that we could take this a bit more further and generate this as a medical intelligence for the doctors, so that putting some ML AI, we could give them that if a patient of certain parameters comes in, then we could predict that in what amount of time and what amount of treatment would this patient be going to be reversed 100%. So if we could start predicting in that way, this would open a new book for the doctors, because each doctor, a doctor who is experienced doctor for 10 years and a new doctor coming in, they have to come on the same platform, because the patient is expecting the same treatment from both the doctors. So that's the challenge for us, and for that we have built this engine, and we'll take it further from here. And thank you, sir, for your kind inauguration. Thank you, Dr. Suhas. Now, may I request Dr. Sanjeev Sharma, sir, to please felicitate Dr. Gurudatta Amin, sir, CMO, Madhavbaug.
Thank you so much. Now it's time for the presentations. So I hope all our 5 presenters are ready with their presentations. And now I call upon the first presenter, Dr. Prajakta Asnodkar, ma'am. Let me give a brief note. This presentation will be only of 8 minutes. After 7 minutes, a bell will be rung over here. And last 2 minutes will be there for any kind of a question to be asked by our chief guest. Good. Good evening, respected delegates and my dear friends. My name is Dr. Prajakta Asnodkar, and my topic for today's presentation is efficacy of Ayurveda-based ischemia reversal program in the management of patients with ischemic heart disease having a history of recent MI. Cardiovascular diseases, principally IHD, is the main cause of disability and death in low socioeconomic countries like India. The Courage and the Stitch trial have shown no added advantage of PDCA or CABG over the mortality rates. Moreover, the usage of allopathic medicines over a long period of time has its many side effects. The European Heart Journal mentions that the risk of cardiovascular event stays high within the first following 365 days in MI patients, indicating that post-MI patients should be carefully monitored and kept under cardiac rehabilitation and prevention. Hence, I would like to present a 3-case series wherein I have not only managed the patients of ischemic heart disease, but also kept them under effective follow-up for more than 2 years. My first patient is a female of 60 years, a homemaker. When she came to me, she was quite obese. She had suffered MI just 1.5 months back. She was a known case of hypertension since 15 long years and hypothyroidism since 4 years. Her main complaints now were dyspnea on exertion, angina, and pityridema. On taking a detailed medical history, I found that she was consuming all sorts of oily fried food, taking a daily nap in the afternoon for 2 to 3 hours. And she would be doing minimal physical activities like just chopping vegetables and preparing food at home. Her 2D echo showed RWMA and type 2 diastolic dysfunction. Her stress test was positive at 3.48 minutes. I diagnosed her as IHD with DM with HTN and advised her ischemia reversal program of 21 sessions along with 3-month Prameha diet box of 800 calories. I also advised her moong diet and intermittent fasting to reduce her BMI. Virachan was carefully planned to reduce her lipid levels, and the results were as follows. As you can see, the patient was completely asymptomatic in 90 days, but also her BMI, which was 36.5, reduced to 32.9 and further up to 25. Her HbA1c reduced from 6.5 to 5.8, and she continues to remain a non-diabetic even now. Her stress test, which was positive at 3.48 minutes, improved to 9.48 minutes and further up to 13 minutes in a 1-year follow-up. Her lipid levels improved, but most importantly, as you can see, her HDL, which improved from 39 to 63. Her 2D echo, which was showing IVS, apex hypokinetic, a EF of 30%, type 2 diastolic dysfunction, has completely reversed and completely normal now with a good EF of 60%. Coming to her allopathic medicines, she was on anti-anginals, calcium channel blockers, beta blockers, statins when she came to me. And those have reduced to no medicine, only hypothyroid medicine is going on. So I would say she's not on any cardiac medicine right now. My second patient was all the more challenging since he was a chain smoker, an alcoholic, eating all sorts of outside restaurant food. He was a known case of diabetes since 20 years, which was uncontrolled. He was diagnosed with HTN 2 months back during his hospitalization for MI. And now his chief complaints were chest pain, which was aggravated on eating his meals. I saw his 2D echo, which was showing akinesia, EF of 30%, and his stress test was positive at 5 minutes with inferior lateral ischemia.
I diagnosed him as IHD with DM with HTN and advised him IRP consisting of 21 sessions along with a 100-calorie reverse diet box. I also advised him moong diet and viration. Most important care was taken towards his lung through spirometric exercises, pranayam, omkar. I also advised him treated Abhyanga at home. He and his family were counseled for de-addiction and habits. I would say that the patient showed very good compliance. As you can see, his stress test improved from 5 minutes to 11.4 minutes. Although there were certain ischemic changes still present, but then we took it to 13 minutes with no ischemia. You can see his anti-proBNP level, which was 3533, improved to 180. His HbA1c also improved, but most important improvement was in his 2D echo, which was showing akinesia, EF of 30%, pulmonary hypertension, LV dilatation was absolutely normal with a good EF of 67%. My third patient was a businessman, 49 years old, who was under much of stress, insomnia, disturbed sleep. He had suffered MI a month back, and now his chief complaints were burning in the chest, palpitation, and headache. His 2D echo showed LV hypokinesia, and his stress test was positive at 7.6 minutes. Although his remaining parameters were normal, but yet his resting heart rate was high. I diagnosed him as IHD with hypertension and advised him ischemia reversal program consisting of 21 sessions with 100-calorie reverse diet box. My main objective was reducing his stress, which I did through meditation, exercise, counseling, Tirtil Abhyanga at home, and Ogrut Nasya. The patient improved well, his stress test improved and became negative within 3 months. His 2D echo also turned out to be normal with no hypokinesia and good EF of 60%. Now coming to the drug tapering, his drugs have almost been stopped. He's not on any hypertensives, he's not on any beta blockers, and still his parameters are absolutely normal. Coming to the pathophysiology of ischemic heart disease. Ischemic heart disease is caused due to imbalance between myocardial oxygen demand and myocardial oxygen supply. There is a dushti of the rasavaha srotas due to ati sevan of snigdha sheath and guru anna and ati chinta, leading to endothelial dysfunction, arterial constriction, sympathetic overactivity, and increase in the heart rate. Various procedures helped me in breaking the samprapti. Ischemia reversal program consisting of Snehan with tail oil, Swedan with Dashmukada, and Basti of Bokshur, Haridra, and Amlaki helped in reducing the myocardial demand, improving the endothelial dysfunction, improving the vascular tone and dilatation of the artery. Studies have shown that Shirodhara has a psychosomatic effect. It reduces anxiety, induces sleep. Virachan along with Sansarjan Kram helped in Shodhan of the Rasavaha Srotas, reducing the lipid levels and Agnivardhan. Studies have shown that intermittent fasting helps in reducing the BMI, insulin resistance, removes the waste from the cells, and helps in metabolic switching. Moong, as we all have learned, is a Shrestha Shimpi Dhanya. It is rich in iron, potassium, and antioxidants. The 2 diet boxes which I used help in carb control, calorie control, carbohydrate control. They were high in antioxidants and high in ORAC value. To brief the entire procedure, I would say reduction in carbohydrate intake, reduction in BMI, reduction in insulin resistance, reduction in diastolic dysfunction, Srotoshodhan Nidan Parivarjan, along with Rasdhatu portion and strengthening of the cardiac muscles, along with SMBG and a good compliance from the patient helped me in reversing the ischemia of these patients. A patient's expectation from his doctor is improvement in the quality of his life, non-recurrence of MI or hospitalization. Ischemia reversal program along with lifestyle modification, stress management, and a good monitoring can definitely help to achieve this. Thank you. Exactly 8 minutes. Exactly 8 minutes. Thank Any you. questions from the chairs? Any questions from the audience? Okay, so we can move over next. Thank you, sir. Mr. Dr. Vaidehi Revatkar from Western Mumbai.
Hello everyone. Good evening. Good evening. Myself Dr. Vaidehi Revankar. I am clinic head for Madhavbaug Boroli East Center. Today's topic for the presentation is role of resistance training in normal type 2 diabetic patient, non-insulin diabetes. The basic reason for selecting this topic was, though found in minority of group, it has a high risk of hypoglycemia, which can lead to a poor quality of life, which can increase the mortality rate of the patient. Also, with the ease with which we are treating type 2 diabetes with Madhavbaug's comprehensive diabetic management care, there were many challenges faced while treating a normal BMI or a lean BMI type 2 diabetic patient. Also, emerging researches showed that resistance training had power to combat the metabolic dysfunctions which were shown by the diabetes itself. Thus, the base of the case which I will be presenting is the resistance training's importance in a normal diabetic patient. Before starting the presentation, I would like to define some basic terms. Resistance training, it is increase in muscle mass when subjected to external weight or a force, which includes three types of resistance training, that is isokinetic, isotonic, and isometric. Second is lean body mass. Lean body mass is the entire body mass minus the fat percentage of the body. And third is muscle mass. Muscle mass is the entire amount of muscle present in the body. The criteria for the selection of the three cases were type 2 diagnosed patient, HbA1c value more than 6.5, a BMI less than 2.5, and an age criteria of 35 to 55 of either sex were selected. Comprehensive diabetic care management was taken as the main methodology. The Panchasutra treatment, the diet, which included a low carb diet, helped me to reduce the insulin resistance of the patient. Panchakarma, which included Snehan, Svedan, and Basti, helped me to reduce the oxidative stress of the patient. Yoga, exercise, and MIB pulse app monitoring were also advised to the patient. Herbal medicines, Bruhad herbal medicines were given and prescribed to patients. Modern diagnostic tool of HbA1c was used as the main base parameter for the improvement of the patient. The normal diabetic type 2 diabetes patient or a lean diabetes patient is considered into a Vataj Prameha. So using the Panchasutra and resistance training, the Vataj Prameha Samprapti was helped to break down. The increase or the imbalanced Vata dosha were tackled by Panchakarma itself. The increased Vata dosha which caused Kledutpatti was monitored and impacted by our low calorie diet and a low carb diet. Also, the Dhatwagni Mandya was increased with our herbal medicines, and the Dhatu Shaitilya was managed with our resistance training and yoga and exercise. Thus, resistance training for all the three cases were given in a systematic formulation. MIB pulse app sessions were advised to patient twice a day. Customized exercise plans were given to patient. Strength training with self weight were conducted at clinic level for all the three cases. So, considering our CDC and resistance training, the case one was a male patient of age 38 years. He had a diabetes since last 2 years and was not on any allopathic medicine. The day one parameter of his BMI was 24.9 and his HbA1c value was 7.2. The second case was a female of age 50 years, had a history of diabetes since last 2 years, had symptoms of arthralgia and dyspnea grade 1, came with a HbA1c value of 10.9 and a decreased lean body mass of 39. The third case, which
hands to exercise. Abdominal girth was also tried to focus with resistance training, considering the core exercises and the visceral obesity. Lean body mass in first two cases slightly showed an increased result, whereas in third case it showed a deteriorating value. HbA1c though had a drastic improvement in first two cases, as resistance training along with CDC management was very well followed by the first two cases. First case, case 1, 7.2 HbA1c was reduced to 5.6 for the first 90 days. And case 3 showed some varied results in their HbA1c value, which was then subjected to a allopathic medicine. Thus, the X factor in all three cases, as first two cases showed reduction in first HbA1c values, they were subjected to an oral glucose tolerance test, in which a GTT negative test is considered as a step towards reversing diabetes. So the first two cases were subjected to GTT test, in which they showed impaired glucose function. Though they showed impaired glucose function, it was a progressive step for me as a normal diabetic or as a normal BMI type 2 diabetic patient. Thus, we can say that resistance training activates the GLUT4 receptors, increasing the insulin absorption through muscles. So the takeaway home message is resistance training can increase lean mass, improving the metabolic quality of the normal type 2 diabetic patient. Thank you. Exactly. Any questions from you? Yes, questions from the audience? No? Thank you. We can move on to the presentation. Thank you, Dr. Vaidey. Now we move on to our third presenter, Dr. Rupali Kavre from Vidarbha Rice. Myself, Dr. Rupali Kavre, presenting a retrospective cohort study of effect of ischemia reversal process, that is IRP, and reverse diet box on plaque reduction. So, introduction. Why I choose this topic? An annual number of deaths from due to CAD is projected to be rise from 2.26 millions to 4.77 millions. India currently has the highest burden of acute coronary syndrome, and for treatment we are losing so many our currencies, foreign currencies for this treatment, and unfortunately our Ayurvedic treatment, we don't have any paper that present and that shows that herbal treatment may provide promising and beneficial treatment on plaque reduction. So to get this opportunity to present how herbal treatment and panchakarma can do for a plaque reduction, I choose this topic. And to prove this study, to evaluate the efficacy of ischemia reversal treatment and reverse diet box on plaque reduction. The study includes total 12 patients, out of which 4 are female and 8 are male patients. According to all the out of total numbers, 3 patients have coronary angiography report shows left main with TVD, that is critical coronary artery disease. 8 patients had DVD. Only 1 patient has single vessel disease, that is plaque in LAD, 70% plaque, and then TVD, 6 patients. Out of that, 9 patients had MI, and all these patients
had a history of diabetes. All 12 patients has history of HTN, and 9 patients I had already said that had already suffered from MI, and out of some patients has coronary angiography reports, and some are having complaints of ischemia, and they are directly recruited for the contrast CT angiography report. The method which was used before IRP treatment, contrast CT angiography test was done, and after 21 settings of IRP treatment, contrast CT angiography was again done. And here we shows the promising result of plaque reduction. Total plaque reduction from 9, just I can't see the values. Sorry for interruption. That is plaque 1 reduced from, there are we can say the categorize that how the contrast CT angiography shows the plaque. Plaque 1, plaque 2, calcium plaque, and how the lumen is. Why we choose that contrast CT angiography, as we are treating it with Ayurveda non-invasively, so we want the test which can maybe we can say work like on our pathy and our goal of treatment, what we want to do with the patients. As you all know, the angiography, it has to use the guideline wire, and which maybe have some life-threatening condition in patient's life. So we choose a contrast CT angiography report, and it depends on the cardiologist opinion how how the plaque consumption, that is stenosis, is there. So we don't want the what we say, we don't want the controversy in the results. We want that on the computerized result, how we can assist the patient from before treatment and after treatment. So we choose the contrast CT angiography report for the plaque reduction as a parameter to assist our treatment. Plaque reduction from 979, plaque 1, that is fibrous plaque and fibrofatty plaque, that reduced from 979 to 650.83, and 6,159.2, 4,707. That is a very promising result. Again, what we had done, we had given a diet kit, reverse diet kit, low carb diet kit, so that how we see the parameters, that weight reduction is according to the this is the graph represent the weight reduction of all 12 patients. Every patient was not obese, but finally we from 67.42 to it reduced to 63.7, just at average weight reduction of 3 kg. How the methodology was used? Reverse diet box was used. A concept of reverse diet box. म्हणजे आपण म्हणू शकतो की आपण लो कार्ब डाएट दिला आहे, जिथे अग्नि पाचनाचा आपल्याला सगळ्यात महत्त्वाचं. ओके, वी वांट टू हिंदी. Okay, we designed this diet for CAD patient with low carbohydrate, minimized fats, and then minimal protein and high ORAC value diet, that is rich in vitamin C, which works on the endothelium, and we use the amalki here for the vitamin C, and which can be says that it is a best rasayan and prithya, and we use it for the endothelium repairing, where we get the result of plaque reduction. Snehana, the Panchakarma treatment, which includes Snehan, Swedan, Basti. Madam, last 2 minutes. Okay, Snehanam, Sneha Vishandam, Mardavam, Kledakarakam. Mardava means arteries, endothelium get repaired, and all the we can say the endothelium dilatation happens here. Svedana, Shita Shula Viparana, Stambha Gaurava Nigrahe.
Agni Martavam, Traka Prasadamam, Bhakta Shraddha, Strotasa Nirmalam. Here is the word Strotasa Nirmalam, that is the Raktavaha Strotas and Rasavaha Strotas, and we reduce the plaque reduction here. Basti, Vatanulomanam, and Anuloman is not only related with the purgation. Anuloman means reaching the targeted direction. It may be Anulom or Pratilom. What we use in Basti, Gokshur, Haridra, and Amalaki. Gokshur, Tridoshakna. We request you to come to conclusion. The last Okay. slide. Extensing and enhancing, त्यांनी वाढवलं, increase, and that works on oxidative stress and repair. Brana Shodhana, Haridra had done this. We can see here how the endothelium will get dilated, and here the duct trappering, you can see clearly that the patient was completely, when they have a critical TBD and they had to take sorbitrate nitroglycerin. After a treatment of 3 months, all the patients, no need of sorbitrate monotrate. That means plaque reduction is there, vasodilation is there, endothelium has there. Of that patient, left main has 80% plaque, LAD, RCA 100% occlude. My colleague says no one should dare to run this patient on TMT. And here, as Gurudatta sir said, the lioness-hearted doctors of Madhavbaug who do this, and this my patient work on TMT for 14 minutes without any complaint, without sorbitrate, without statin, and this is what our result clearly. This is another case of RCA plaque reduction, 480 centimeter reduced to 253 SDMQ. Conclusion: so the mean baseline total atheroma before treatment 620.45 reduces to 460.49. The average atheroma plaque reduction is 150.96 mm. That P significant value is 0.001, and weight reduction, as usual, it has also significant value. So we can conclude that IRP treatment and our reverse diet box is completely effective in plaque reduction. Thank you so much. Yes, sir. Any questions? I think the presentation was self-explanatory and it is a huge success. Thank you, Dr. Rupani. I call on stage the fourth presenter, Dr. Prachi Maskar from Western Mumbai. Hello everyone, I am Dr. Prachi, Clinic Head of Koregaon West Clinic, Mumbai. I am going to present the case study of the patient with a pleural effusion. Pleural effusion is occurred as a complication of chronic heart failure. Next slide. Current approach to the pleural effusion is non-invasive techniques like tapping or administration of diuretics putting central line. But in this case study, I have used non-invasive approach like Ayurvedic medicines and therapies to treat the pleural effusion. Next slide. Patient visited the clinic on 6 June 2021. 62-year-old male patient and known case of CHF, CAD, and diabetes. Complaining of DOE, dyspnea on exertion, and weakness.
Pedal edema was also found in that patient, and history of pleural effusion in May 2021. For the pleural effusion, tapping was done, so no infective foci was found. The fluid from the tapping was gone for the histopathological testing, and no infective foci and CA was the found. Then this patient enrolled for the panchakarma therapy like HFRT care plan 3, and for the Goregaon in the Goregaon West Clinic. Next slide, please. 2D echo, whatever investigation done, I have mentioned here. 2D echo dated 5th June 2021. In that time, LVF was 30%, and 2D echo dated December 2020, LVF was 40%. So gradual reduction in the LVF was found. Angiography done, 2 blockages were found. One was 70% and another was 100%. Pro-BNP levels were 5,000 pg per ml, and other findings were HbA1c 7.5, hemoglobin 10.9, and serum creatinine 2.2, blood urea nitrogen 14.01. Next slide, please. Pleural effusion episode number 1. He had history of pleural effusion. After starting the treatment, after starting the panchakarma treatment, patient started complaining of DOA during night. So I requested him to go for the chest X-ray and USG abdomen. So mild pleural effusion seen in the chest X-ray. So first time I said you go for the tapping better way. So he gone for the tapping, and because of pleural effusion, panchakarma treatment, that is HFRT treatment, was kept on the hold. Next slide, please. Panchakarma treatment started once again after tapping, but some days later pleural effusion reoccurred. This is the episode number 2. If we saw that this is 2nd episode after discussion with the ZMS, that is zonal medical head, panchakarma treatment was kept on again hold, and for pleural effusion, following treatment was started. Next slide, please. Following instructions were given to the patient, that is nil by mouth, NBF, nil by mouth for 1 day. During nil by mouth period, Madhavbaug 3 times per day, and LAPE for the local application on chest and back was advised. LAPE contains Victor 100 gram, Haridra 50 gram, and Vekhanda 50 gram. Pattabandhan of Arka and Eranga Patra on the chest of the patient was advised. Next slide. This is the photo of the patient where patient has applied the Arka and Eranga Patra on his chest. Next slide. This is the Pattabandhan done by the patient. Next slide. This is the LAPE application on the chest of the patient. Next slide. Advice propped up position while sleeping. Patient was advised propped up position. Water intake restricted to 1 liter per day, and Shadanga Paniya was advised to drink. As you know, all Shadanga Paniya, Musta, Parpataka, Ukshira, Chandana, Udicha, Nagaragi. And following Ayurvedic medicine started, tablet Punura. Punura is nothing but a Punarnava Ghanavati. 2 times a day. Linoleuc is a liver tonic, 15 ml. BD, and tablet Simsavis contains ashwagandha 2 times 2 per OD. Dipram Kada, Guduchi and Gudmar. This is for diabetes. I have advised him 15 ml BD before food. Next slide, please. During this course of treatment, patient was also taking some allopathy medicine. For example, tablet Lacilocton 1 per day, Glycomet SR 500 1 per day, Cardes 1.25, and Ecosprin Gold 1 at night. Next slide. The main treatment given is Vardhaman Pippali Rasayan. Vardhaman Pippali Rasayan started for the pleural effusion. First day, 4 Pippali ka decoction patient was advised to take. Kshidapak was made basically. Then 1 Pippali increase per day up to 7th day. After reaching 10 Pippali, 1 Pippali taper down per day. And then Pippali Rasayan stopped on the 14th day. And this is the one set. So like this, 3 sets of Vardhaman Pippali have been used. Next slide, please. Along with the Vardhaman Pippali Rasayan, patient was constipated. So Amari oil 15 ml in the morning, empty stomach. Amari oil is nothing but the modified castor oil. Then Tamovin syrup 200 ml plus 5 gram of Abhrag Basma twice a day, and Tamovin syrup 200 ml plus 5 gram of Yashat Basma twice per day.
Tamavin contains the Bharagni, Karkatshungi, Bibhitak, Shatti, Kokshu, and Chestamar. Next slide. This is the chest X-ray of the patient. If you can see, first 4 ribs are visible, and then everything below that is fluid. Next slide, please. After giving this Pipali Rasayan and all the treatment, improvement in this respect, you can see at least 5 to 6 to 7 ribs are clearly visible, and everything below is fluid. Fluid is still remaining, but at least 2 ribs you can see the improvement in the chest X-ray. Next slide. Discussion part. Lap of the Haridra, Trikatu and Vacha is anti-inflammatory, Ushna and Jalashoshak in nature. Shadangapani is Ruksha in nature. Shadangapani is also Deepan and Pachan in nature. Eranda and Arkapatra are Vatanulomak and Kafagna respectively. Pipali is Ushna and Kafagna. And because all the above properties, pleural effusion got resolved. So, next slide, please. Pleural effusion can be successfully treated by non-invasive treatments like Ayurvedic medicines and therapies. Thank you. Any questions, sir? Yes, sir. Dr. Prachi. Yes. That's a great presentation, Dr. Prachi. Can you throw some light on Panchakarma procedures you took upon, and probably what was the cause then when you stopped it? You see that something got aggravated, then you stopped the Panchakarma, then you shifted it to tapping. So probably, what could you assess? The role of Panchakarma is more or as evident that the Shaman Chikitsa work better. So can you throw some light on that? सर बेसिकली मैं ये कहना चाहूंगी कि पंचकर्म थेरेपी है वो 2 चीज है, एक मेन व्याधि है, एक उपद्रव है. तो उपद्रव इज प्लूरल इफ्यूजन. जब उपद्रव ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब पाखड़ ने से कहा है कि पश्चात चिकित्सा पूर्णम बलवंतम उपद्रव, मतलब अगर मेन डिसीज से उपद्रव ज्यादा हो जाता है तो वी शुड ट्रीट द उपद्रव फर्स्ट एंड देन मेन व्याधि. सो फॉर मेन व्याधि HFRT ट्रीटमेंट वाज एडवाइज, एंड फॉर उपद्रव शमन चिकित्सा वाज एडवाइज. So these are 2 different things altogether. Both are HFRT treatment में जो पंचकर्म करते हैं उसमें है स्नेहन, स्वेदन, बस्ती एंड हृदय धारा. तो स्नेहन में सेंट्रिपिटल ओलिएशन बोलते हैं हम लोग उसे. तो स्पेशल टेक्निक से किया जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट ऑयल मसाज किया जाता है. एंड देन स्वेदन में आई थिंक कुछ हमें हल्की सी डिफिकल्टी आ रही है, कैमरा शायद डिस्कनेक्ट हो गया है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट बैक विद द टीम. जस्ट कुछ समय का क्षण का समय लगेगा, हम अभी कनेक्ट करते हैं. प्रॉब्ली इंटरनेट की इशू होगी. आई थिंक इंटरनेट का इशू है. वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट बैक विद द टीम. आई थिंक कुछ इंटरनेट की खराबी के कारण
कैमरा डिप हुआ है, बट टीम वहां से अभी जस्ट फोन में बात हुई है, विद इन अ मिनट दे आर कनेक्टिंग बैक। तो यहाँ पर आप सब जो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन ये रहेगा कि अभी तक के जो आपने केसेस देखे हैं, इन केसेस के बीच में आपका खुद के क्वेश्चंस आपने क्या ऑब्जर्व किया है, आपके हिसाब से क्या पॉइंट्स हैं जो आपको सबसे बेस्ट लगे? सो प्लीज टाइप कीजिएगा चैट बॉक्स के अंदर में कि व्हाट इज इट आउट ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, which are the points that you really like the most? So let's start interacting. जब तक हमारा रिमोट कैमरा जो है वो कनेक्ट नहीं होता है फिर से, तो विद इन अ मिनट और सो एक्सक्यूज मी, विद इन अ मिनट हमारी टीम जो है अभी कनेक्ट करेगी राइट बैक फ्रॉम उदयपुर। तो तब तक आप चैट बॉक्स में डालिए कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स थे वो कौन से पॉइंट है, सो दैट वी कैन हैव सम डिस्कशन अराउंड इट। कि अभी तक आपने जो ऑब्जर्व किए केसेस क्या आपने भी ऐसे कोई सिमिलर केसेस देखे हैं? हैव यू gone through something similar in your own practice? If yes, then type in the chat box yes, and please let us know how have you managed those cases. आपने अपने प्रैक्टिस में ऐसे उन केसेस को कैसे मैनेज किया है? तो लेट मी नो कि आपकी क्या राय है। और जब तक चैट बॉक्स में हम टाइप करते हैं, आई एम वेटिंग फॉर अदर कैमरा टू ज्वाइन इन। जो हमारे रिमोट कैमरा है कमिंग इन फ्रॉम उदयपुर, वहाँ पे इंटरनेट शायद ड्रॉप हुआ है, तो टीम फिर से जोड़ने की कोशिश कर रही है। वी आर जस्ट वेटिंग विद इन अ मिनट। एंड बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन चल रहा था, चलते चलते बीच में इंटरनेट ड्रॉप हो गया है। तो मेरी अभी भी जस्ट बात हुई है उदयपुर की टीम के साथ में, तो वहां पर इंटरनेट ड्रॉप हुआ है, वो फिर से कनेक्ट कर रहे हैं। दे विल बी बैक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो चलिए, यहाँ पर आई कैन सी डॉक्टर रंजीत दिख रहे हैं, डॉक्टर श्रद्धा दिख रही है, डॉक्टर प्रीति गोस्वामी दिख रही है, डॉक्टर स्मिता, वेलकम, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर श्रद्धा कुडिलकर है, गुड ग्रेट, गुड टू सी यू ऑल हियर, नाइस टू सी यू। डॉक्टर दीप चंद्र यादव एमटी आयुर्वेद है, आपका भी स्वागत है आज के इज लाइव टेलीकास्ट ऑफ द थर्ड कार्डियोलॉजी सिंपोजियम कमिंग इन फ्रॉम उदयपुर। तो वहां से हमारा संपर्क, इंटरनेट का संपर्क जो है रिमोटली टूट गया है, और हम इसे फिर से एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वी विल बी बैक वेरी सून। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हमारे साथ में मेंबर्स जो आए हुए हैं चैटिंग के लिए, अभी वेट कर रहा हूँ। आई थिंक आप चैट में मैसेजेस टाइप कर रहे हैं, तो जब तक आप टाइप कर रहे हैं आपको बता दें कि वी आर लाइव ऑन मल्टीपल चैनल्स, यूट्यूब, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के अंदर में आज का ये थर्ड कार्डियोलॉजी सिंपोजियम लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर स्तुति का मैसेज है कि इट इज वेरी इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन, उनको बहुत अच्छा लगा है। और साथ ही साथ में काफी लोगों के बहुत ही बढ़िया, श्वेता सिंह मैम, डॉक्टर श्वेता सिंह है, उनका कह रहा है कि इट्स अ मूवमेंट ऑफ प्राइड। मिस्टर जय नायक हैज जॉइंड इन, वेलकम जय सर, गुड टू सी यू हियर। एंड जस्ट आपके ही डॉक्टर थोड़ी देर पहले ही एक अराउंड आधे घंटे पहले ही हमने प्रेजेंटेशन देखा था राइट फ्रॉम डॉक्टर प्राजक्ता, a movement of pride for all of us to see all our doctors presenting on this third cardiology symposium. So अभी तक हमारे साथ में प्रेजेंट कर चुके हैं डॉक्टर प्राजक्ता अस्नोडकर, उनके बाद में डॉक्टर वैदेही ने प्रेजेंट किया, डॉक्टर वैदेही रेवणकर, एंड डॉक्टर रूपाली कावरे ने नेक्स्ट प्रेजेंट किया, एंड डॉक्टर प्राची का प्रेजेंटेशन चला रहा था, रादर प्रेजेंटेशन just got over, and we have seen a temporary disconnection in the internet. So we are trying to restore the connection with Udaipur team. हम फिर से कोशिश कर रहे हैं इस कनेक्शन को रिस्टोर करने का, तो वी जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। हमारी टीम बहुत ही जल्दी दे विल बी बैक ऑन टू दिस प्लेटफॉर्म। चलिए, तब तक पावर मैप जो आज हमने लॉन्च किया है उसके बारे में आपने सुना तो होगा। पावर मैप क्या है? इट्स वन क्लिक पे पूरा डायग्नोसिस। सो हमारे जो पेशेंट्स, माधवबाग के जितने भी पेशेंट्स हैं, उनकी जो डेटा है पूरी की पूरी डिजिटली, उनकी इम्प्रूवमेंट,
उनका एनालिसिस, उनकी जर्नी को मैप करने के लिए पावर मैप बना है। तो लेट्स हैव अ लुक अबाउट पावर मैप। तब तक हमारी टीम जो है फिर से कनेक्ट करती है विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो पावर मैप क्या है, इसका एक छोटा सा क्विक इंट्रो देखते हैं टिल माय टीम इज एबल टू कनेक्ट बैक। अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस होंगे पावर मैप के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क अस अबाउट व्हाट इज पावर मैप। सो इन केस अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है तो चैट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। वी विल डिस्कस विद यू व्हाट आर योर डाउट्स। हम आपसे डिस्कस करेंगे। चलिए हम अब ये भी मैसेज आया है कि इंटरनेट काफी बुरी तरह से डाउन हो गया है और वहां पे टीम कनेक्ट करने की कोशिश कर रही है। देयर सीम्स टू बी अ मेजर इशू। वी आर जस्ट ट्राइंग टू रिकनेक्ट बैक एंड लेट्स सी कि क्या हम कनेक्ट कर पा रहे हैं बहुत ही जल्दी। मैं अपनी माइक को कुछ क्षण के लिए म्यूट पे कर रहा हूं और वी विल बी बैक विद इन अ फ्यू सेकेंड्स। तो बहुत ही जल्दी हम आपके पास में आने वाले हैं। इंतजार जस्ट कुछ क्षणों का है। माधवबाग माधवबाग इंडिया का लीडिंग हार्ट केयर नॉन सर्जिकल मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, जिसने जानलेवा हार्ट डिजीज को बड़ी सफलता से मात दी है। यहाँ मॉडर्न मेडिकल साइंस, एंशिएंट आयुर्वेदिक प्रिंसिपल्स और रिसर्च बेस्ड एडवांस्ड आयुर्वेदा के ग्रेट कॉम्बिनेशन से हार्ट डिजीजेस को सक्सेसफुली ट्रीट किया जाता है। माधवबाग की बुनियाद रखी थी सुप्रसिद्ध वैद्य माधव साने ने। पिता के समृद्ध ज्ञान और अनुभव की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया पुत्र डॉक्टर रोहित माधव साने ने। मॉडर्न मेडिकल साइंस में एमबीबीएस और फेलोशिप इन कार्डियक रिहैब की उपाधि लेने के बाद डॉक्टर रोहित साने ने एडवांस्ड आयुर्वेद पर रिसर्च करके डिजाइन किया कॉपीराइटेड हार्ट केयर ट्रीटमेंट और स्थापित किया देश का पहला आयुर्वेदिक कार्डियक रिहेबिलिटेशन सेंटर माधवबाग, जहां इन्होंने एंशिएंट हीलिंग मेथड्स के साथ कंटेम्परेरी एंड मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोचेस के कॉम्बिनेशन से कार्डियक केयर को दिया एक नया विजन। माधवबाग के रिसर्चेस को वर्ल्ड्स बेस्ट मेडिकल जर्नल लैंसेट, यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी एंड इंडियन हार्ट जर्नल से भी स्वीकृति प्राप्त है। देश के कई शहर यहाँ डॉक्टर रोहित साने की Dr. Rohit Madhav Sani, sir, founder and CEO of Madhavbaug. Madhavbaug has successfully helped Indian society fight successfully reversing chronic disorders like heart disease, diabetes, hypertension. All doctors, staff members, franchise owners, and operations express gratitude for giving us such a great opportunity, patient service, and creating impact in disease reversal in the field of clinical cardiology. Thank you, sir, for everything. I request, sir, to present vision and mission 2025.
Honorable Chief Guest, today I am going to talk about the next maybe the 10 years that we are going to talk about. But we are going to talk about the next 10 years that we are supposed to see. And I am supposed to sum up those 10 years in the next 10 minutes. So that is going to be a difficult job. But I not like challenges, so I'll be going ahead for it. To start with, if at all go back to the story of 2006 when I began with the whole story of Madhavbaug, this was a general question in my mind that even though we compare Ayurveda with allopathy, allopathy has come up since last 150-200 years, while Ayurveda has come back since about 5,000 years minimum. Even though we compare these two sciences, we see that allopathy has been considered as the first line of therapy for any kind of chronic cardiovascular diseases, and Ayurveda is not being considered as the first line of therapy. From that day onwards, I thought about keeping this target in my mind that one or the other day, we are supposed to reach to this target, making Ayurveda as the first line of therapy in the coming years. So that being an Indian science and we being Indians, it should be our prime responsibility to get this target achieved as soon as possible. So the question arises that why Ayurveda has not been the first line of therapy? Itna acha science hone ke bawjood, why has it not been the first line of therapy? Personally thinking, the views might differ in all of you, but personally speaking, मुझे ऐसे लगता है कि ये तीन मेजर कारण होंगे जिसके वजह से शायद ये आयुर्वेद would have not been the first line of therapy. The first reason that I normally see is lack of parameters. Like normally when we talk about Ayurveda and we talk about Vat, Pitta, Kapha, we talk about Prakriti and all these things, there are hardly any typical objective parameters that we can work on. Like for example, I am absolutely proud about these people who have presented right now your papers, and I could see that you have published or you have presented your papers with typical parameters that you had improved. अगर ये parameter नहीं होते, तो शायद हम ये इतने अच्छी तरह से present नहीं कर पाते. अगर वही पैरामीटर्स जब हम पेशेंट्स को बताते हैं तो पेशेंट्स को पूरा रोड मैप सामने आ जाता है उनके सामने कि अच्छा ये चीजें होने वाली है, इतने इतने पेशेंट्स के इतने टाइम में मैं इंप्रूव होने वाला हूं. लेकिन ये पैरामीटर्स अगर उनके सामने नहीं होते तो शायद उनको हम पे उतना बिलीफ आना would have been impossible. So this would have been one of the most important reasons why Ayurveda has not been the first line of therapy. Because आयुर्वेद में तो शायद वो पैरामीटर्स बोले गए हैं, रस धातु 9 अंजलि होना चाहिए, रक्त धातु 8 अंजलि होना चाहिए, जल 10 अंजलि होनी चाहिए, सारा बता करके रखा हुआ है. लेकिन शायद हम में कुछ खोट थी that we couldn't understand those things well, and hence the first step that we have taken towards going ahead as a vision and mission is to give Ayurveda good eyes with these parameters. अगर हम लोग ठीक तरह से देखें तो ये पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हम जैसे आगे जाएंगे. So the second reason what I think would have been the most important reason for Ayurveda not being the first line of therapy could be lack of availability, lack of reach. अगर हम देखते हैं कई सारे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स हमको दिखाई पड़ते हैं जो मॉडर्न या एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, और ऐसा होने की वजह से हम आयुष के लोग इतने ज्यादा नंबर्स में होने के बावजूद सर्विसेज जो पेशेंट्स को बाहर मिलती है वो मेजरली एलोपैथी की होती है. तो पेशेंट जब ये एलोपैथी की सर्विस देकर के ठीक होता है तो वो दुआएं और नाम वो एलोपैथी को देता है, आयुर्वेद को नहीं. तो अगर हम ठीक तरह से देखें, अगर हम लोग आयुर्वेद की प्रैक्टिसेस, सर्विसेज, अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्टर्स एज वेल एज हॉस्पिटल्स एज वेल एज मेडिकल शॉप्स, if at all these go on increasing, each and every patient gets an availability of Ayurvedic clinic besides his residents, I am sure that in the coming years Ayurveda would be the first line of therapy. This is the second reason. The third reason, according to me, why Ayurveda would have not been the first line of treatment option would be lack of research.
अगर हम गूगल पे अभी अगर सर्च करते हैं तो गूगल पे अगर कोई भी आप डिसीज सर्च कर लो तो गूगल इज जस्ट एन एग्रीगेटर ऑफ ऑल दीज रिसर्चेस। अगर हम गूगल पे सर्च कर ले, समझो पाइल्स सर्च कर ले, हम लोग समझो हार्ट डिसीज कर ले, डायबिटीज कर ले, तो पहले मॉडर्न के रिसर्च पेपर्स वहां पे दिखाई पड़ते हैं, आयुर्वेद के दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि उसको एग्रीगेट करते वक्त इतने कम आयुर्वेदिक रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं कि बेचारा गूगल करेगा भी तो क्या, उसको एग्रीगेट करके उसको मिलते हैं एलोपैथी के पेपर्स और वो वही दिखा देता है। तो ये अब हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी टारगेट बन जाता है कि इन 3 कारणों पे अगर हम काम करना चालू कर देते हैं तो इन द कमिंग इयर्स वी ऑल विल बी नोन टू मेक आयुर्वेदा एज द फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी। So the mission and vision going ahead is going to be based on these 3 important steps. So सबसे पहले let's bring the scientific parameters, like all of the scientific presenters today, whatever you have published, I'm absolutely proud about it all. अगर हमारे चीफ गेस्ट को अगर वो ज्यादा समय दे देते तो आई एम श्योर कि हमारे सारे के सारे 350 डॉक्टर ऐसे ही पैरामीटर्स लेकर के और भी सुंदर सुंदर प्रेजेंटेशंस कर सकते हैं अलग अलग केसेस को लेकर के। तो सर आपको कभी अगर समय होगा तो आप जरूर माधवबाग आकर के अगर हम सारे डॉक्टर्स का एक एक प्रेजेंटेशन भी सुन ले तो वी आर मार्चिंग टुवर्ड्स दैट पॉइंट where Ayurveda will be joined up with these modern parameters as an integration of modern medicine and Ayurveda and taking ahead these things. जैसे बहुत सारे मॉडर्न पैरामीटर्स अभी हम लोग आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे अभी गुरुदत्त सर ने बताया हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। आज एलोपैथी की दुनिया जो है वो हार्ट रेट वेरिएबिलिटी को सामने रख रही है डेथ, मॉर्टेलिटी और मॉर्बिडिटी को रिड्यूस करने के लिए। तो आगे ये भी पैरामीटर सारे सामने आएंगे, एज वेल एज आप जैसे भी सीटी एंजियोग्राफी कर रहे हो जिसके वजह से आज तक एंजियोग्राफी में सिर्फ परसेंटेज ऑफ ब्लॉकेज को महत्व दिया जाता था, वहां पे हमने ये शुरुआत कर दी है जिसमें उस ब्लॉकेज के क्यूबिक मिलीमीटर में उस ब्लॉकेज को गिनेंगे और वो कितना कम होता है ये आपने पब्लिश करके दिया हुआ है। जैसे आपने डायबिटीज के लिए HbA1c GTT है, आप ब्लड प्रेशर के लिए एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग कर रहे हो, ऐसे ही नए नए पैरामीटर सारे आते रहेंगे। और ये नए पैरामीटर सिर्फ इसी कारण से आने हैं क्योंकि आयुर्वेद को आगे जाते वक्त हमको ऐसे साइट पे पब्लिश करना है कि जहां पे आयुर्वेद शुड बी सीन एज अ साइंटिफिक ट्रीटमेंट टू द मॉडर्न प्लेटफॉर्म। क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म आज वो बादशाह है कहीं बैठा हुआ, उसको अगर हम जाकर के दिखाते हैं तो एक बादशाह दूसरे बादशाह से जब बात करना चालू करेगा तो ऑब्वियसली द चांसेस ऑफ ये बादशाह को एक्चुअल बादशाह होने का मौका शायद मिल सकता है। So going ahead, we had conducted n number of RCTs and in the future also will be conducting RCTs। जैसे अभी नई जो RCT हमने प्लान की है वो नारायण हृदयालय के साथ प्लान की हुई है। तो नारायण हृदयालय के साथ जो RCT प्लान की है वो है ब्लॉकेज रिवर्सल के लिए। तो अब नारायण हृदयालय के जो हॉस्पिटल्स है वो ब्लॉकेज रिवर्सल की अपनी थेरेपी उनके पेशेंट्स पे दे करके वो रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल पब्लिश कराएंगे, ऐसा हमने तय करके रखा हुआ है। एंड द कमिंग 9 to 10 months we should be able to do that। वैसे ही नए नए इन्वेस्टिगेटरी टूल्स हम लोग अंदर लाते रहेंगे, जैसे HRV है, जैसे स्लीप स्केल्स है, बहुत सारी चीजें नई नई आती रहेंगी और ये नए जैसी चीजें आते रहेंगे integration of modern and Ayurveda will be happening as we go ahead। Next is going to be about digitalization। जैसे डॉक्टर सुहास ने और डॉक्टर गुरुदत्त ने जो अपना पावर मैप जो मेडिकल एनालिसिस पैनल है वो आपको दिखाया हुआ है, ऐसा ही डिजिटलाइजेशन हम आगे लाते रहेंगे। MIB पल्स ऐप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट माइलस्टोन जिसपे आज 1.25 लाख से भी ज्यादा पेशेंट्स आज इस MIB पल्स पर है और ये सारे पेशेंट्स को आप लोग अच्छी तरह से मॉनिटर कर रहे हैं, उनसे अच्छे खासे चैट्स चल रहे हैं। अगर आपको पता होगा तो हम 12 लाख चैट से भी ज्यादा चैट्स आप लोगों ने किए हुए हैं आपके पेशेंट्स के साथ। इट शुड बी हैविंग 20 लाख से भी ज्यादा, वो बढ़ते चले जाएंगे ऑब्वियसली। सो ये जैसी आप चैट जितने पेशेंट से आप कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग में रहोगे उतने ही इंप्रूवमेंट्स होते रहेंगे। वैसे ही आगे अगर जाएंगे तो वी हैव टू इंप्रूव आवर रीच। आज हम 268 क्लिनिक्स पर है, आगे जैसी हम जाएंगे हमको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स, आप 350 डॉक्टर्स अपने से जुड़े हुए हैं, हमको ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को अपने से जोड़ना है।
हमको ऐसी कोई चीजें करनी है, जैसे महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के साथ हमने जो अपना चेयर हमने वहां पे एस्टेब्लिश की है, जिसमें से हम प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कोर्स हम रन करते हैं, ऐसे ही आगे जा करके हमको 1 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स हमको ट्रेन करने हैं विद द साइंस ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, क्योंकि जितने ज्यादा डॉक्टर्स ये ज्यादा सीखेंगे उतना ही हम हमारे मिशन पे पहुंच पाएंगे टू मेक इंडिया फ्री फ्रॉम हार्ट डिजीज। सो वी प्लान दैट ये जो सारा कोर्स हम लोग रन करेंगे, आई वुड ऑलवेज ट्राई टू रिक्वेस्ट शर्मा सर दैट द प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी का कोर्स जो हम लोग नॉर्मली हम लोग जो हमारे MUHS के साथ चलाते हैं, आई वुड ऑलवेज लाइक दैट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर कैन आल्सो कम along with this and come up with some course like this, so that this will help always the doctors to come in the future with these kind of sciences. Along with this, the third most important step that we are supposed to go ahead is with researches. आज जैसे ये डॉक्टरों ने उनके 5 रिसर्चेस पब्लिश किए, मैं जानता हूं आप जैसे सारे लोग जो बैठे हुए आज मौका ना मिलने के कारण राहुल सर ने सिर्फ 5 लोगों को मौका दिया था, इसी वजह से आज 5 लोग से पब्लिश कर पाए, लेकिन मैं जानता हूं कि जैसे हम लोग आगे जाएंगे हमको और ज्यादा रिसर्चेस पब्लिश करने हैं, और पब्लिश कहाँ करने हैं तो हमको मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे पब्लिश करने हैं, मॉडर्न के कार्डियोलॉजी प्लेटफॉर्म पे करने हैं। हमने आज तक लैंसेट में पब्लिश किया है, हमने आज तक यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी पे पब्लिश किया है, हमने इंडियन हार्ट जर्नल में पब्लिश किया है। ऐसे ही हम लोग जैसे आगे जाएंगे, जैसे अभी गुरुदत्त सर ने बोला था कि एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, आप सब लोगों ने API की किताब तो मेडिसिन की पढ़ी होगी, तो उस API की जो मेडिसिन की किताब आप पढ़ा करते थे, तब आप लोगों ने जो पेशेंट्स ट्रीट किए हैं उन्हीं का जो एनालिसिस था, उन्हीं का रिसर्च पेपर अब API में पब्लिश हो गया है, जर्नल ऑफ एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया, treatment will be in the textbook of API in the coming years. तो उसके लिए तैयार हो जाइए कि सारे MBBS के डॉक्टर अब आयुर्वेद के पेपर्स पढ़ेंगे and they'll start implementing your science in the coming future. तो ये हमको पहुंचने के लिए हमको 500 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स अपने को पब्लिश करने हैं ऑन वेरियस डिफरेंट इंटरनेशनल पीयर रिव्यूड कार्डियोलॉजिकल जर्नल्स। तो ये 500 से भी ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स पब्लिश करना, ये हमने जो टारगेट लिया वो आने वाले सालों में, तो ये एक बहुत ही बड़ा टारगेट खुद ही में है। उसी के साथ अगर देखेंगे तो आप जैसे 5 लोग आज यहाँ पे पब्लिश कर रहे हैं, वैसे ही आगे आने वाले सालों में जो मॉडर्न कार्डियोलॉजी प्लेटफॉर्म पे जो इंटरनेशनल मॉडर्न कार्डियोलॉजी रिसर्च प्रेजेंटेशंस होते हैं, उसमें आपको जाने का मौका दिया जाएगा, जहां पे ऐसे ही पेपर्स जो आप अभी प्रेजेंट कर रहे थे वैसे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर प्रेजेंट करते हो तो वो बात बहुत ही अलग होने वाली है। क्योंकि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर कार्डियोलॉजी के प्लेटफॉर्म पे जाकर के आयुर्वेद का रिसर्च पेपर मॉडर्न के पीयर रिव्यू जर्नल के सामने पब्लिश करता है तो बात ही बहुत निराली हो जाती है। तो ऐसे ही चीजें हम लोग करते रहेंगे इन द फ्यूचर। टू सम अप विद द होल थिंग, in the next 10 years, what are we supposed to achieve is to empower Ayurvedic doctors like you to treat these cardiac patients so that we could be able to reduce down the burden of heart disease in our nation. तो आने वाले सालों में हमको भारत को हार्ट डिजीज और उसके रिस्क फैक्टर से मुक्त करवाना है। थैंक यू। Thank you so much, Dr. Rohit Sane sir. And I request Dr. Sanjeev Sharma sir to please felicitate Dr. Rohit Sane sir. Captain Dr. Amit Sharma sir to express his views about critical cardiology.
August gathering. It is indeed a proud moment for me, first of all, to sit besides my guru, and I'm sure everyone present in this hall can understand my emotions. कि जब आप पढ़ रहे होते हैं, आप किसी को आगे देखते हैं और अगर आप उसके साथ में बैठ सके तो इससे ज्यादा प्राउड प्रिविलेज शायद किसी स्टूडेंट के लिए नहीं हो सकता. To give me this opportunity to share the space with one of the stalwarts of Ayurveda. Now coming to this evening, I am thrilled to be a part of the August gathering here. And मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं अभी डॉक्टर रोहित साने सर से भी अभी डिस्कस कर रहा था. And I'm sure इस गैदरिंग में बैठा हुआ हर वो शख्स माधव बाग में आने से पहले वो जरूर ये शायद फील करता होगा अपनी प्रैक्टिस में कि जब हम बीएमएस करके फील्ड में उतरते हैं तो शायद हमारे सामने एक वैक्यूम होता है कि अब कहाँ जाए, अब क्या करें. I'm sure, right? Yes. तो इस संस्था ने जो अपना मजबूत आधार आपको दिया, एंड मुझे मैं रोहित साने सर की एक बात कोट करना चाहूंगा जो उन्होंने मुझसे आज से करीबन 3 साल पहले जब हम मिले थे तो कही थी कि ही बिलीव कि वो वही रिजल्ट को अगर रिप्लिकेट कर पाए तो वही सक्सेस है. आई एम श्योर उन्होंने अपने लेक्चर्स में आपको भी जरूर ये बात कही होगी. और अगर आज वो रेप्लिकेशन 250 से ज्यादा सेंटर्स पे एक साथ हो रहा है तो दैट इज अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो वैक्यूम जहां से आप चलते हैं और अगर आज आपको पाके आपको आई एम श्योर वो वैक्यूम तो एक कहीं पीछे रह जाता है. एंड नाउ यू आर द बंडल ऑफ एनर्जी. और वो बंडल ऑफ एनर्जी, ऐसे कितने सारे बंडल ऑफ एनर्जी मैं यहाँ देख पा रहा हूँ. एंड आई एम श्योर कि जब ये एनर्जी जब हमारी सोसाइटी में जाती है तो आई एम श्योर कि बेटरमेंट ही होता है. तो kudos to you sir and the organization, and I'm hopeful that this academy and industry का जो ये pact है, this should lead the further roads of future, जहाँ पे हमें ऐसे सेटअप्स और ज्यादा देखने को मिलेंगे. तो जो सर का मिशन 2025 या मे भी सर ने बोला लिखा 25 बोला 10 साल, अगर ये जो एकेडमी और इंडस्ट्री का अगर हाथ थोड़े से जुड़ जाए तो आई एम श्योर कि ये सफर थोड़ा जल्दी तय हो सकता है. So with these words, I again thank the organization for this great evening. I'm thrilled and thankful to be a part of one of you. Thank you so much. Thank you so much, sir. Requesting Rohit sir to please felicitate Amit Sharma sir. To please express his views about this third Cardiology Symposium. Thank you, Dr. Chaudhary. And very good evening. Namaskar to all of you. Respected Dr. Rohit, today is my host, chief guest, Captain Dr. Amit Sharma, all the stalwarts of Madhavbaug and galaxy of doctors who are associated with Madhavbaug. First of all, I welcome you in this state of Rajasthan because you have organized this function, this event in Rajasthan. And I, being an institution from Rajasthan, I really welcome you all to this stage. And thank you all for organizing this event in this state and this venue.
because this is wonderful opportunity for me also to bring experience. Before that, perhaps I have sometimes met Dr. Rohit Sane. I was just discussing with him, but I don't think that we have any time interacted about. I have heard the name of Madhav, but today really I came to know about the strengths, the activities, enthusiasm, positivity, progressiveness of this esteemed organization. For this, I acknowledge, appreciate, and admire your efforts, Rohitji, your efforts, and your team's efforts, and all the associated. You're doing a wonderful job. Why wonderful? Because today there is this era is a wave of the modern medical science. This we all understand. And in this way, you are continuing to lit the lamp of hope through Ayurveda with all the modern technology and tools. This is really wonderful thing. हवाओं में दीप जलाना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. कुमार वारावंकवी की 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं. नहारा है इश्क न दुनिया थकी है, दिया जल रहा है, हवा चल रही है, नहारा है इश्क. So you are lighting that lamp in the stormy night or day. This is really wonderful. And I congratulate the presenters, today's presenters, all women. This is another. This is another very important. I don't know you appreciate this thing or not. That this is not to be taken on lighter part. This is very important that our graduates and postgraduates from Ayurveda, and that too from the women fraternity, they are coming up and they are daring to manage such patients which otherwise even the modern people they do not dare. So again, congratulations to the presenters and the organization also, that how this organization is leading from the front and giving the opportunity to all, may he or she may be senior or junior. And the presentation technique and capacity of the presenters were excellent. It shows that you're not just managing a clinical practice. To manage a clinical practice is a tactic. But here, you are merging the clinical practice with the research and logic. Your patient's satisfaction index, which I have seen through your presentations, is very, I think so, very. You have talked about so many success stories. And your practice might have some difficult stories also and failures also. And my simple advice to all of you, that sometimes if such kind of events are happening, then we should also keep a very small session, 1 or 2 presentations on failures also, so that how we can improvise at what the difficulties our doctors they are facing in their practice and the research. Because I'm a surgeon by training, means I'm Ayurvedic surgeon basically by training, and I used to do the orthopedic practice only. And when I used to attend some high-level conferences or seminars with modern fraternity, then there were few sessions of failures also. So this is my humble request to you people, that keep a room
or space for one or two presentations on failures also, and so that your colleagues can discuss on those failures, on those unsuccessfulnesses, and we can devise the further pathway to improve. This is my simple request. As Dr. Rohit said that he is having the MOU and they have established chair in the MUHS. And as head of the institution of National Institute of Ayurveda, which is the government of India's apex institution of Ayurveda, I, through this platform, offer you that we can also enter into a memorandum of understanding, MOU, and we can also plan some journey together. This is coincidence, I think, that last year our this institute has been declared as Team to University, and for under de novo category. And what is that de novo category? That we have to run such courses which are not run by any other university in the world, not in the country, but in the world, and not regulated by the regulatory council. So it is binding upon us that we have to start 5 or more than 5 courses, such courses which are de novo, नई तरह के courses. And fortunately, one of those PG courses is yoga and preventive cardiology. We are yet to start, and that will be the MSc degree and 2 years course. So this is a nice time and right opportunity to a way that you people already are walking on the path, and you people can help us along. I'm a man of nature that I'm not egoistic. मदन मोहन मालवीय जी ने आप सभी को मालूम होगा, एक भिखारी से भी दान मांगा था to establish the Banaras Hindu University. So I'm also same nature that मुझे तो हर आदमी से अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने आयुर्वेद को आगे ले जाने के लिए I'm ready to get help from each and every one. Your organization is esteemed organization, biggest organization, private organization in Ayurveda, I think so, in this field. So I hope that if we enter in the MOU and we can work together, that will be much more helpful for the society and for the enrichment of our system. In fact, it is not the enrichment of system. Our system is already rich, but it is just resurging of the system. Dr. Rohit was talking about the 3 factors that how and why Ayurveda is not first line of choice. His 3 reasons are valid reasons, but I can add 4th one also. That is the attitude of Ayurvedic doctors. Rest of all are okay, but if we are not going to improve or change our attitude, then we shall not be successful. And you have changed the attitude of your practitioners, of your doctors who are assisting you. And I think that once the change in attitude is there and positivity is there, the positive attitude is there, because positive attitude always creates a positive aura. And when you create or you are having a positive attitude within yourself, you will find that all positive people are around you, and vice versa. If we are having negative thoughts, negative attitudes, then all kinds of negative people, negative aura will be there and negative people will be there. This is the principle of life. Why to sacrifice our positive attitude? There are so many ups and downs in the life, but we should continue with positive attitude. And once we are having positive attitude, then everything is possible. And this is the positive attitude of Dr. Rohit, and then of all of you.
which have given so nice results. Right now, I think, as I was told, that your presence is in 7 states, I think. Am I right? Yes, sir. 8 states. So now I hope that because you are not present in Rajasthan, but today I think this is your opening gate for Rajasthan also, and I wish that for the humanity, not for your organization purpose, but for the humanity, this esteemed organization should expand its being at least pan-India, so that we can help the society. Because Ayurveda, again, I am saying that Ayurveda is not the need of Ayurvedic people or India. It is the need of the world. But they don't understand. And what are the strengths of Ayurveda? Because why they don't understand? Because we have not made them to understand the things. And reasons are plenty of. And it is not the only Ayurvedic fraternity which has failed to bring the Ayurveda upwards. It is not only the Ayurvedic fraternity. It is the failure of India as a whole, because it is the Indian heritage knowledge. India has given so many knowledges to the world, but we have failed collectively for all those knowledges to share with the world for the benefit of the humanity. And Ayurveda is one of them. And it is a failure of our other sciences also, because they have not helped Ayurveda. They have taken Ayurveda just as a traditional medicine, just churna bati gutika. It has been taken like that. And with that flow, sometimes we also flow. So we have to change in that way. And this is nice blend of modernity and ancient knowledge. You are using all the modern ultimate parameters. And because with your blessings and wishes, I'm also the part of the policy making of India's so far as the National Commission for Indian System of Medicine, and previously it was the Board of Governors, PCI. We have taken certain very bold steps. And here, because you are using all the modern technologies, modern techniques, modern tools, and sometimes you may be questioned of how you are using all this, where you are having the rights. So we at NCISM platform, as policymaker, we are taking care of this. And we are trying to come up with certain regulation in such a way that you can freely use these technology, maybe laboratory or some other radio imaging diagnostic techniques or other tests, whatsoever it is, and other tools also. Even sometimes you may be questioned that how and why you are using thermometer, which is the simplest tool. How? Who authorized you to use a thermometer? This is the question which people can ask. Because now there is a fight. Because we are having so many proponents for Ayurveda and Indian heritage knowledge, but we are also having opponents. Recently, a few months back, you might have observed that when we at CCI, Board of Governors, we notified certain surgical authorizations to our postgraduates of Challe and Shalak, then there was huge roar. And the modern fraternity, few of them, they came with all kinds of weapons against us. And still they are. And we are fighting with them. Similarly, but we have authorized. Now it is up to the fraternity that how to use them. Those things. Similarly, here, but the nice work you are doing, we shall try to authorize through regulations so that you can have a free hand to use all these modern tools and technologies for the welfare of the patient. But so far as the treatment is concerned, that will remain, of course, Another, just a small suggestion, I may be wrong, don't take it otherwise, that there are two of my observations. You are using, in your 5 sutra, you are using one word, that is herbal medicine. Am I right?
Can we change it to Ayurvedic medicine? Yes. Because why I'm saying this thing? Because herbal medicine is especially now becoming a separate branch of medicine. It is evolving now in the Western world. They are taking our stance, they are taking our all those things, and now they are coming up with the name of herbal medicine. So if we continue to use this term, we are in fact enriching their that what we can call their data or whatsoever we can call. So if possible, I may be wrong. This is my just personal view that in spite of herbal medicine, you kindly use this Ayurvedic medicine. That will be wonderful. And another, I think that maybe a typo mistake or I don't know. Digitalization. You have used the word for digitalization and digitization. So I think we should be very clear what term we have to use. Digitalization is the treatment which you use in the treatment of chronic heart failure. Here you used to give the digitization. But digitization is the really it is the to digitize your data. I may be wrong. Sorry for that. These are very two small my suggestions. My again congratulations to all of you, and I will be happy to be associated with you people. And Dr. Rohit, I invite you for some this type of talk with you and with your one or two other experts. And we shall arrange. We can say that it can be sensitization to our teachers, particularly of diet kissa and maybe of other disciplines, and we can have interactions with them so that they can also get sensitized and they can also understand that this is also the way of working. Because in government setup, this is something unfortunate that in government setup there is a mode of complacency mode is there. हम संतुष्ट हो जाते हैं सर ठीक है तनख्वाह मिल रही सरकारी नौकरी प्रमोशन टाइम से होनी है तनख्वाह टाइम से मिल रही है छुट्टियां मिल रही हैं 10 बजे की बजाय 9 बजे की बजाय 11 बजे तो भी चल रहा है कौन डायरेक्टर तो देख नहीं रहा है देखेगा तो क्या कर लेगा निकाल तो सकता नहीं दिस इज गवर्नमेंट साइकोलॉजी जो भी गवर्नमेंट में होगा वो ऐसी साइकोलॉजी में कई बार आ जाता है बट इन माय इंस्टीट्यूशन वी आर चेंजिंग द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल we are having younger generations who can deliver. They are having capacity to deliver. They are enthusiastic, but they are not having the proper direction. Because I believe in the dedication, devotion, determination with proper direction. Because dedication, devotion, determination, the terrorists are also having. The terrorists हैं उनके पास डेडिकेशन है हमारे से ज्यादा उनके पास डिवोशन है हमारे से ज्यादा उनके पास डिटर्मिनेशन है हमारे से ज्यादा बट देयर डायरेक्शन इज रॉन्ग इफ द सेम पर्सन works with the proper direction in proper way then he becomes the resource for the country and if he works with the improper direction then that resource is the wasteful resource and sometimes deleterious and dangerous also. So with your help, I want that what the way I'm trying to improve the institution, you will also add your contribution in that and one talk from you can be organized. We shall arrange for that, right? And on behalf of NI, I although Captain Amit is not directly now the part of NI, he is alumnus of NI. But I will request Dr. Amit that please coordinate with Dr. Shane to have a program, one day session, one full day session, so that you can bring one or two other presenters also with nice presentation, build up a confidence and change the mindset of the people there. So this is my invitation and request also. And again, my thanks. And I am really obliged that you have invited me.
In fact, when invitation was extended to me by Dr. Rahul ji, I was repeatedly asking that what is my role there? I was not able to understand that what my role is. So now I can understand that now what will be my role with your organization. How we can work together. We are already having some MOUs with private organizations of the country. For example, one Pune even, there is one organization that is Supraja. We are running a program for doctors and pregnant females, women. Because Supraja is a concept that if a healthy child is born, then healthy society, healthy nation can be developed. Nowadays, our lifestyle and all other things are in such a way, and the modern medical science has advanced in such a manner and such a way and such up to such an height that no one is healthy. Can we claim that we are healthy? Because medical science is advanced up to such an extent that we are not healthy now. So we want to build healthy, physically healthy, mentally healthy, and socio-spiritually healthy. Only physical health is not sufficient. And we have to take care of, and you already are taking care of, Trayobstambha, Ahar, Nidra, and Brahma. We are talking much about Ahar nowadays. Ahar Kranti, nutrition, Poshan Abhiyan, the government of India has started. And we are the part of that also, and that is very essential. But still we are failing to spread the message of food and dietetics to the masses. That also needs to be done. That is also our responsibility. And Nidra is very important. Please stop. This is also where area where we need to work, because Nidra is having so many consequences upon our health. If our sleep pattern is proper, then our health will remain maintained. And Nidra also at the proper time. It is not that you are sleeping daytime. Daytime sleep is not good. I don't know. Everybody will agree with this fact that daytime sleep in Ayurveda, there is principle for power nap during summer season. But daytime, otherwise sleep. And this modern science is, our modern friend is sitting. Modern science is that our sleep pattern is having strong correlation with the diurnal rhythm, circadian rhythm. And it is the sleep which is taken during night times that is important. That helps to regenerate the liver. Because this is the beauty of this organ, liver, that it regenerates at night time. It does not regenerate at daytime. And you know, whatsoever the metabolic disorders you are talking about, may it be the hypertension, diabetes mellitus, or CAD, or cancers even, they are basically born through and by the liver. And if we keep our liver healthy, we can keep so many diseases, particularly metabolic diseases, away. But our liver is not healthy. We are taking food late night. We are getting up late morning. And that is the main reason for our faulty liver. And if liver is faulty, everything, we are forgetting liver. So you are taking care of all these things. And I hope that this movement, a campaign, will result into a Jan Andolan. And that Jan Andolan needs to be created and developed so that we can create healthy individual, healthy family, healthy society, and healthy nation. With all these words, I am thankful to you for giving me this wonderful opportunity to be with you people. Thank you very much. Thank you, Dr. Sanjeev Sharma sir. I request Dr. Rohit Sane sir to please listen. Dr. Sanjeev Sharma.
as we have 20, overall we had 20 presentations for this third cardiology symposium, but we selected 5 doctors for today's event. So I will like all 3 of you, please come on stage, and we have a good felicitation for all those 20 doctors who have given their presentations to us. Please, sir, please come on stage. Now, one by one, I will be calling all doctors, starting with all 5 doctors of today's event. So, starting with Dr. Prajakta Asnur. Big round of applause. Lakshmi Narayan sir. की आवाज नहीं आ रही है।
midst of this event. Let me introduce a gem of a person of Madhavbaug, Shilpa Rupasni sir, COO of Madhavbaug, Chief Operations Officer. Energy can neither be created nor destroyed. Energy can only be transformed from one form to another. We are blessed to have you as a powerful transformer who is continuously helping Madhavbaug clinics and hospital staff to keep their morale high to achieve new heights in patient care. The third Cardiology Symposium Organizing Committee and Team Madhavbaug appreciate your work as Chief Operations Officer, Madhavbaug. So please. I will request Captain Dr. Amit Sharma sir, and Mr. Shilpa Rupasni sir, COO Madhavbaug. Introduction about Yogesh Malavalkar sir, Chief Strategy Head of Madhavbaug. Your ideas and strategies are helping Ayurveda to reach millions of Indian hearts. You have become a strong bridge between chronic heart disease patients and skillful Madhavbaug cardiac care clinics and hospitals. The third Cardiology Symposium Organizing Committee and Team Madhavbaug appreciate your work as Chief Strategy Officer. We are thankful for your presence in the third Cardiology Symposium 2025. Yogesh sir, please. I will request Dr. Sanjeev Sharma sir, please felicitate Yogesh Malavalkar sir, Chief Strategy Head of Madhavbaug. Now I will request Dr. Rahul Mandore sir, please conclude this meeting. Thank you, Dr. Mukha. And I'm thankful to all my colleagues, my doctors, the RIC team sitting here. They are traveling since last 2 days, and I think the sleepless journey, and they are having a smile on their face. So I will not speak a lot here, and I'll try to make it as short as I can. I'm thankful to all of you. I'm thankful to Dr. Rohit Sane sir. This idea of a symposium, Cardiology Symposium, it's actually that has given me this opportunity to start and take the initiation of the symposium 3 years back in Dubai. And after Dubai, we had a cardiology symposium in Malaysia. It's the third cardiology symposium that we are conducting here. So we started with 2 presenters, and now we are 21 presenters. Out of them, the 5 GMO presentations we have listened to. So this is the excellence what Madhavbaug has reaching here. I'm thankful to Dr. Sanjeev Sharma sir on very short notice. We have never met before, and I just called him once today, and he very positively responded at that time. I am very thankful for you sir for your presence here. I'm thankful to Captain Amish Sharma sir. At a very short notice, I think we are in touch since last 2 years, but still just one call, you accepted the invitation and you came here all the way driving from Jaipur to Udaipur. So I'm thankful for you, sir. I'm thankful to my special zonal medical head team who is standing here, and they helped me a lot for conduction of this interview. I'm thankful to my medical team, Dr. Gurudatta sir, Praveen sir, Suhal Doctor sir. Special thanks to Dr. Omkar sir, and special thank to Clifford, Manju, and yes, the financial team, and also Dr. Aman Kapoor sir, who is not with us here, but he is taking the responsibility of because 1,000 Ayurveda patients are seeing this event on live, because we are it's a hybrid event that we have conducted, so it's not just not offline. We are also conducted this online. So thank you to Dr. Aman Kapoor
for conducting this session live. And thank you, Saturday Script, for a beautiful organization and very beautiful and classic venue. So I think okay. So we have a small gift for you, a Saturday Script, and I request Dr. Rohit sir to felicitate here. Sir, yeah, Saturday Script team. I request all Saturday Script team to come here quickly, क्योंकि हमें भी बहुत जल्दी ट्रेडिशनल फोक डांस यहाँ पे देखना है. We are expecting much more from you, Saturday Script team, and we are expecting tomorrow will be the best day. And apart from this, so Panchakarma therapists and the patient care executives who are sitting there in your clinics and taking care of the patient in absence of you, actually we should appreciate their work, and especially the patient care executives who are sitting there in your clinics and taking